Now on air with the CricCom commentary team. Hello, and welcome to the match number 8 of the Sri Ram Capital Maharaja Trophy by the Karnataka State Cricket Association T20, and this is the matchup between the Gulbarga Mystics and the Mysore Warrior. And the Gulbarga Mystics have won the toss and they have elected to field. Talking about both the lineups for the Mysore Warrior, who will be batting first, the lineup is Ravi Kumar Samarth, Kodana Ajit Karthik, Karun Nair, Rahul Rawat, Tushar Singh, Shiv Kumar Rakshit, Manoj Bhandage, Jagadisha Suchit, M. Venkatesh, Monish Reddy, and Shashi Kumar. Talking about the Gulbarga Mystics, Vaishak Vijay Kumar is the captain. Adarsh Prajwal is the wicketkeeper. L.R. Chetan, Anish KV, Smaran Ravichandran, Amit Verma, McNeil Norona, Avinash D, Hardik Raj, Abhilash Shetty, and Kotarangada Appanna. Yes, and here we are a trio. Swapnil Jadhav, myself, along with first voice that you hear was of Shaurya Londe, and the voice that followed him was of, with an antique and a good texture that he has. Very, very jealous of his texture now. And it is Omkar, and we will be, taking you through this match number 8 here at the Maharaja Trophy T20 2023 from the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, where the two teams, that is the Mysore Warriors and the Gulbarga Mystics, are on 5th and 4th spot respectively. Mysore Warriors lost both the matches that they played, and now they are in a spot of bother. If they lose this, they'll be in trouble that they might not end up in the first 4. That would be contention for the final final business end matches to follow. Well, on the other side, the Gulbarga Mystics have won a single match out of the 2 outings, and they've got 2 important points to their kit. Here it is, the first ball that is will be bowled by the bowler Abhilash Shetty. And talking about the openers that have come to bat for the Mysore Warriors are Ravi Kumar Samarth and Kodana
Ajit Karthik, yes, they will open the innings with the bat and make sure that they end up with a good score and a good start at first, because a job well started is half done, as they say, and they will require a good start here. First ball from the left-hander, Abhilash Shetty, and it is Samarth who is on strike. Ravi Kumar Samarth along with the Kodand Ajit Karthik, and a packed offside field. It is backward, it is point. It's starting with the wideish of the first slip. Then it is a backward point covers extra cover, and then it is long on with a deep mid wicket and a fine leg. So that is a good field setup for the batters of Warriors team by the Mystics captain. And where if you understand the situation of not giving out runs freely to the batters up frontly in the first 6 overs, that is the power play, you will tend to create some pressure on the team. Where you get into a situation of setting up yourself for a good looking start, you always want your bowlers to be on the mark always. And here a couple of good deliveries from Abhilash Shetty to Ravi Kumar Samarth have resulted in some of a disciplined start to this. And now it is driven to the covers, gap between the short extra cover and the cover fielder for a fantastic cover drive. Opened the full face of the bat, the footwork was there, and Ravi Kumar Samarth has started the run flow with a boundary on the third ball in the first over. Yes, and Kodanda, Ajit Karthik and Ravi Kumar Samarth, both as pairs, have not strived till now. But this time Ravi Kumar Samarth with that boundary showcasing that these two as a partners have the capability and they would be wanting to do that. Ravi Kumar Samarth not having that start of the tournament which he would be wanting, but nevertheless the tournament is just to get go. And while we're talking about that, a very very good piece of fielding towards the square leg region to stop, I would say, to stop 4 runs, as a dive towards his left was done by the fielder out there, and it was a catch. It was a catch chance, but nevertheless the ball had so much of speed. It was Ajit Karthik who wanted to I would say flick the ball towards the square leg, and it had a lot of power, but just a single taken of 8, and 5 runs are on the board. And the match now building upon. It is the Gulbarga Mystics versus the Mysore Warriors, and one team really needs to come up. And talking about Ajit Karthik, the batting, he scored 29 runs against the Dragons, but that start wouldn't be enough, as he would be wanting to put up big totals this time. It was Abhilash, a very good in swinger by him. It was really close to the wicket, the ball, and it ricocheted from the bat to the pad and then was inching close to the wicket. A very good delivery by him. Certainly a solid delivery by the left-arm pacer. I mean, this certainly reminded me of Zahir Khan, the way he used to get the ball swinging inside the right-hander from outside off. I mean, it was just an exceptional delivery, and he will be gutted to not get the better of the batsman here. Karthik on strike for the final delivery. Abhilash teams in. It's a back of a length delivery on the body. Karthik swivels on his back foot and gets a stunning boundary to end the over. Warriors are 9 for no loss after the first over. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलरली ऑन
हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट। Wide outside the off stump was the first ball by Vaishak Vijay Kumar, and it has gone straight to the fielder at the point region where they get no run, and it is this start for a disciplined attack that needs to be implemented by the bowlers, because if they give free runs up frontly, it is going to be difficult for the bowlers after your ball to just come and have a go at the batters. Somewhere down the line you need to understand that situations will arise where the batsman will give you chances of taking his wicket, but if at all you miss on those chances, it's going to be difficult for your team to come and just pounce back on the batters. Very, very important phase of play, the first 6 overs of any innings, because there you set the match for the remaining 14 overs, but you don't get carried away by those runs, by those 6 overs, thinking that these are the only 6 overs that you have to play. No, you have to be a part of the entire 20 overs of the match, and that is where you need to understand that every over is an important over, not only the first 6 overs, where you set your tone but not just get carried away by the first 6 overs is start what you get, and not get bundled because of a slow start. So there it is, as confusing as my sentences were, the match can be a little confused, because if you get runs and you lose wickets, then you kind of enter a panic zone where you need to understand that this is not the way to play. And also, when you are trying to get maximum of your potential, you should be calm and composed. Stick to your basic plan that you have decided in before entering the arena, and you will be awarded. Now a bouncy delivery just close to the gloves. Is it out? Is it no? They are just waiting. And did it hit? Umpire says no. He's unmoved. He is unmoved, the umpire. And it was very, very close. The ball bounced from nowhere, and as it rose up, it just troubled, and the batsman was forced to go into the shot. And there have been good catches in this tournament, low and dipping catches being taken at the deep and also behind the stumps by the keepers, flying here and there to make sure that the fielding efforts count for your team's victory. And even if it doesn't count, your best of your potential needs to be just given out on the field when your team requires it. Now the bowler is having a good run here. The first 5 deliveries have given out only a single run to the Warriors team, and Samarth and Karthik, especially Karthik in this situation, is not getting the ball to get towards the gaps, and he has played 3 deliveries here and not got any run against his name, because the bowling has been good. These dot deliveries up frontly can create questions in the mind of the batters. I should go for the lofted shots, I should go for the unorthodox shots, and in that process you might end up losing your concentration and giving out your wickets. Yes, and loss of concentration is not at all required here. Yesterday we saw quite high scoring games, but today the first game, which was against the Bangalore Blasters and the Hubli Tigers, it was a very low scoring game, as Bangalore Blasters putting on their hat trick of losses. With the loss against the Hubli Tigers, they scored only 105, and 111 was the number put by the Tigers to get the victory.
while we're talking about that, we really hope that this game continues. It is 11 run on the board and it is 11 for no loss after 2 overs. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द. We start the third over with quite a great boundary. A perfect cover drive to start off this over. And it is Ajit Karthik who gets his second boundary and he's looking in a good form here. In the first over, we saw 2 boundaries, one boundary by Karthik and 1 boundary by Kumar. And now the second one. So just slowly and steadily now they will be requiring to get acclaimed and accustomed to this pitch, to this new ball as it gets a bit older, and these both 2 batters have to have that synergy between both of them to get a good total. We have seen the 2 matches they have played early on. They have not been able to get a partnership, but at this time, with such good batting by Ajit Karthik, this time again the similar region, the similar shot, and he gets the similar amount of runs, back to back 4s for him. And what a shot by him! He's just looking in quite a great concentration while the ball is going towards the boundary as well. He has his eyes on the ball. And that is what is required by him. 19 runs are on the board, and the over, which has been bowled by Abhilash Shetty, has been gone to back boundaries here. Abhilash Shetty was looking quite well in the first over. Yes, he went for 9 runs, but now he went for 8 already, and 4 balls are more remaining. This time, a shorter delivery, it got the better of Karthik, and Karthik wanted to pull that shot, but mistimed it completely. Edge towards the mid-wicket region for a wicket here. And it is Karthik who will be going back out of 13 runs which he makes. Yes, and he's got a couple of boundaries at the start of the over. No need to go in for a flurry of boundaries when you need your wicket to be there on the pitch in the middle for a remaining few overs. There is this situation arising every now and then when you lose concentration. You want to tell no one. You want to tell no one that, see, I'm in good form. You have to continue your best when you are giving out for your team, because now what is the use of you? I mean, not on the crease now. You will be not able to score those runs now as you are back into the dugout. What that wrong shot has implemented, it has given out a situation where now you are in the midst of the power play and you have a wicket lost. You have a new batter who will be coming in and he'll try to make some adjustments with his temperament in order to get good runs in the remaining 3 overs after 3 balls in this over itself, where he'll be forced to play some big shots. He'll not be set, and now the power play can go against you. Is it that true? So this is where your experience comes into play, and you have to now work on that temperament section also. Certainly, they need to work on their temperament section, but I think this contest is one to watch out for. Karun Nair against Abhilash. Abhilash is the highest wicket taker for this side. He has taken 5 wickets so far in this competition, and I think with this one, the tally goes up to 6 runs. And meanwhile, 6 wickets. 6 wickets. Sorry, my bad. But meanwhile, Karun Nair, I think he is one of the best batters of this Mysore Warriors side. He is the highest run scorer for them with his 77 runs, and the only batter who
who scored a half century in this campaign for the Warriors side. So certainly this competition or this matchup is certainly to watch out for. Abhilash into his fifth delivery, a bit shorter on the pads. Samarth has no room on offer and he just nudges it into the mid-wicket region for a dot. 20 for 1 at 2.5 overs, one last ball remaining. Samarth will be hoping to just knock the ball around, because I think Mysore Warriors have got 2 boundaries in this over. They need not have to be aggressive in this over, but Ajit Karthik could not control his emotions and he got out for an early departure. Not an ideal start for Gulbarga Mystics, but not an ideal start for Mysuru Warriors. And this final delivery is blocked towards mid-off for a quick single. 21 for 1 at the end of 3 overs are Mysore Warriors. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए. एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम है यश पाठक. क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है. इस ऐप Welcome to Hardik Raj by Samarth, and he is welcome to the boundary of the second ball of his first over. Spinner he is, and this situation demands runs. Ravi Kumar is getting those runs, and he is proving to be a batter who is looking in some kind of form. Imagine you have lost a wicket in 25 runs, where you're saying there are 5 boundaries been hit. So 20 runs have come in boundaries out of the 25. And, this left arm orthodox introduced in the 4th over might prove as a boon for the Mysore Warriors. Otherwise, if at all they allow this bowler to settle down, might be a difficult situation for them. But 26 for 1 with that single towards the Cow's vision, getting Karun Nair. I remember his 300 that he made for India, and this was that session in India's progress in Test cricket, where they had Karun Nairs and all those young lads coming in. But then he faltered with the opportunities he got, and I know with Omkar around in this combox, we'll have some stats for Karun Nair as well, as soon as he just logged into some of the officials and network providers to get in. Oh no! Oh! A missed stumping chance. Oh! You can't miss that of Karun Nair. He'll make you pay. He can make you repay, and he can make you weep now, if at all. Now you are so lazy that at first you get into mindset, okay, I'm being stumped. And then when he realized he was so lazy, bad cricket from both. Bad cricket from the wicketkeeper first, of missing off a stumping,
But then Karun Nair should have been attentive and at least tried. When we look at the replay, see how lazy Karun Nair was. He missed it and then he just did not want to get back into the crease. What is this for an effort? Talking about stats, I mean, I did open my phone and I can see that Karun Nair is the highest run getter for this side. So if they would have taken this wicket, I mean, certainly Gulbarga Mystics had the game in their hands. If they would have gotten Karun out cheaply here at the end of 4 overs, Mysore Warriors are 27 for 1. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप 4 overs done, 27 for 1 was the score, and with a single towards the third man region, it is 28 runs on the board for the Mysore Warriors. The captain is there still thanks to fumble by the keeper, and then I am just stressing on the point, he was too lazy to get back into the crease. Even if the keeper would have got a second chance, I think Karun Nair would have been wanting for that return. And this is not good because, see, you are not in a contention of the national side anymore, but we can't deny the possibilities also. If you have a good session or a good season, I'm talking about at the domestic level, you can be considered in the highest format. But the highest level demands some of cleverness. It was not seen in that effort to get back into the crease. Now, Ravi Kumar Samarth is batting on a different planet. Although he's only gone to 18 runs, in 34 he's got 18. And what this has resulted is he's getting positive and positive and positive every shot that is played in. When you see 34 runs on the board and say that in the 34 runs you have got 5 boundaries on a 6. So that is 26 runs in boundaries out of the 34 runs, and now 35 with that single on the third ball of this 5th over. It is Vijay Kumar Vaishak who's bowling this 5th over of the power play now. 35 runs on the board. Just want to know, how do you tell a player about his laziness and approach in the batting? I mean, looking at the standards of cricket that Karun Nair has played and so far, certainly every cricket player needs to get his basic right, and this time he wasn't quick enough to get back into his crease. That he is lacking in the basics, which is really bad signs for a player who is capable to take the game away from the opposition single-handedly. And this has been a very cautious start for Karun Nair. He scored 77 runs of just 39 deliveries in this game so far, which is his highest run score as well. And he was looking in fine form, hitting the ball all across the park, down to the leg side, on the offside. He was toying with the field, dominating the bowlers. But suddenly in this match, he has gotten off to a very cautious start. Yes, and he should play with that caution rather, because the bowlers are asking question to him, and Karun Nair would be needing to answer them quite well. As this time it is Samarth Ravi Kumar who is answering it with a great strive, and that is required, as the Mysore team needs to know that they are in a power play, and in a power play quite so well. So both the batters, one down, which is Karun Nair, he's the captain of the Mysore team as well. He would be needing to put up a good score by the end of the power play. We are currently moving to that, and the last ball of Vaishak here, and a 6 has already arrived. Then a single, then a single before that 6, a single after that 6, and a dot, and then a single again.
So 9 runs have come in the over. So it is a positive over for the Warriors, and this is required. Exactly, this is required. One odd boundary, one or two odd boundary, and then running between the wickets as we move to the last ball of this over. And Vaishak bowling it fuller towards the leg. It was Samartha who flicked the ball towards the deep square leg region, takes a single and ends the over. It is 37 for 1 after 5 overs for the Mysore Warriors. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए. एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट. Welcome to the bowler, KP Appanna with a boundary through the covers, and Kotarangada Appanna is just a kind of a pay because they have got the license now to go for some runs because they have played those 5 overs very well, not stopped themselves from scoring those boundaries on deliveries which were meant to be hit, so that they are not in a shell. Okay, they're not into that what we say the pressured zone, but if at all they want to release the pressure, it is this over. It's going to be this over because slow left arm, just a slow left arm bowler. He is a perfect pick. Why would you ask the bowler to come and bowl the 6th over? That's the last over of the power play, where you know that he's not going to give you the pace, and a margin for error in the first 6 overs for any spinner is very less or minimum, and he is bowling those arm deliveries. The first couple of deliveries were those arm deliveries where you get the power from the arm, and he just rushed in to bowl, and the length was wrong. The line was away from the off stump for the first delivery, and then it was towards the middle and leg, half pitched, just allowing the batter to free his arms, and Appanna is up against Ravi Kumar Samarth, who is batting in prime form. Now a fuller delivery being played towards the covers. There's a player at extra cover to get the ball fielded, and dot ball. So he missed out. Now he's very unhappy with that effort. But now, you know, Karun Nair needs to go and walk up to him and say, hey lad, you have got those 2 boundaries. You have got 8 runs in the first 2 deliveries. Even if we go for a singles, it's going to be okay. You don't have to overstress. Now it is the single towards the cow corner region, allowing Samartha to rotate strike and get Karun Nair on the strike. He is batting on 4 of 6 deliveries that he's faced. A couple of good boundaries. One was a drive, the second one was a pull in front of square, and there was no secured region in the deep towards the backward square leg region. I apologize, in the square leg region. A good over till now. 9 runs of the first 4 deliveries. Yes, and this time a better delivery by Appanna, chopped from the bat of Karun Nair, and it was really closing close to the stumps. Appanna wanted to bowl a slower delivery. That is the reason why he has been called. Yes, he is going for the boundaries, but at the same time, his change of pace and the spin added with it has been affecting Karun Nair, not Samarth,
but Karun Nair was definitely affected, and a single taken off that ball, and a single taken right now by Samarth to end the over. It is 48 for 1 after 6 overs for the Warriors. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत। And start of a new over, 7th over. Power play is done, and power play had 48 runs on the board, 1 wicket lost. It is a good start. Can't say a very relicking start or a very expected start from the batters. But nevertheless, 48 and a score of 8 runs per over is a good start. So from here on, we can expect them to carry on themselves towards 160-65 mark if they go by this run rate. Nevertheless, they'll get those overs in the middle where they can go for 20-22 runs, and even positive intent of scoring runs can get you to 160. Even if you don't try too many things, just one boundary per over and rotation of the strikes will implement the cause to a very good effect, because here you are having a batter named Karun Nair who has seen the international arena and who has spent almost a couple of decades in the domestic circuit as well. So he's not new to this game and to this format. And where you have a good set batter like Ravi Kumar Samarth, the partnership that he had with Kodanda Ajit Karthik. Even Ajit Karthik was looking good, because in 13 runs he made, he got 3 boundaries. So the boundaries have been a part of their cultivation of the 48 runs in the power play. When we see in the 48 runs, see 7 boundaries, so 28 and 1 6, 34 out of 48 have been in boundaries. So a good approximately 75-80% of the runs have come in boundaries. So here we can expect, as a spectators, not as the commentators, we just as a cricket lovers, we expect a team which has got those scoring abilities to just implement basic cricket, as you said earlier. Basic needs to be applied every now and then, because in the course of trying too many things upfrontly, you tend to forget the basics, and this is where the things start going wrong for you. And when you are in the midst of a cyclone, even a small twig can be of great help. Now it's a 6th second of this innings, and second to Ravi Kumar Samarth, who moves on to a great innings, 37 of 23 with that 6 towards the backward square leg region, went into the shot. It was perfectly planned, and for that he deserves an applause. Certainly deserves an applause, and this is also his highest score as well in this competition. His previous best was 29, and certainly he has surpassed himself
his best in this innings, and he moves to 37, including two maximums, the only maximums of this innings. Final two deliveries left in this over. It is a full one outside off. Samar just leans in and helps it to mid-off for a quick single. Karun Nair now comes on strike for the final delivery. He hasn't been able to find the rhythm in a similar manner like Samar, but we all know what Karun Nair is capable of. The partnership has also moved to 39 runs of 27 deliveries. This is what the Mysore Warriors needed when they lost the first wicket early on inside the power play, and this partnership is certainly helping them to take them to safer shores. Final delivery coming up now. It is a full end delivery in the slot. Karun Nair makes some room for himself and flays it over the mid-off fielder. One bounce over the ropes. At the end of 7 overs, Mysore Warriors are 62 for 1. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए. एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम है यश पाठक. क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है. इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल. क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में. पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए. तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर. और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा. थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा. तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक. तो थैंक यू सो मच फॉर हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिककॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी. और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज. तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिककॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड. दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा. थैंक यू. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन. हाय, मेरा नाम है. It is 63 for 1, the score on the Mysore Warriors camp. And it is Samarth and Karun Nair
who are batting with quite a few prowess. Ravi Kumar Samarth is 39, and we are moving towards the 8th over now. And it is Hardik Raj who is bowling. Hardik Raj first over for 7. Hardik Raj first over which he bowled, he went for 7 runs, and now he is bowling with his might here. A 17-year-old prodigy, I would say. He has been bought in to the Gulbarga team, and Samarth now inching close to his 50. The power play is hindered. Now their strategy would be to get that one odd boundary and go for those runs, because at this point they have tried to get the maximum they can exploit from the power play, but now they would be needing to drop a few gears down and build this partnership on, and get those odd runs while keeping the wicket, because if they go all guns blazing now, if they start hitting all the balls clearing the boundary, they would miss time some, and there would be a chance of a wicket. And it is now Samarth inching close to his 50. He's at 40 of 26. What a innings he had played. He is certainly doing the job for Mysore Warriors, and he is inching towards his first half century of this campaign. Karun Nair remains at 12 of just 11 deliveries, and watching this innings from the other end. Now he gets a chance to bat as Samarth rotates the strike as he pulls this one towards the long on region for a single. Mysore Warriors now 67 for 1. Hardik Raj has just 1 delivery left in his spell, and he has only conceded 5 singles so far. So he will be delighted with this over as well. He has been economical so far, but hasn't been able to threaten the batters really. There was a single stumping opportunity earlier, but the keeper wasn't up to the task. And this time he has to reload his final delivery as he spills this one down the leg side for a wide, and the umpire indulges himself in some exercise. 68 now on the scoreboard. Warriors haven't really lifted their game up. Oh my God, what a peach of a delivery. How has this missed the stumps? Brilliant end of the over by Hardik. Warriors are 68 for 1 at the end of 8 overs. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा. एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे. It was done 68 for 1, and from here on it is going to be a sensible application of cricket because they are into a situation where they have 12 overs in front of them. So 12 into 10 can be 120, 12 into 8 can be 96. So somewhere in that region they need to get an odd boundary every over, or they have to make sure that every ball is being scored off. Single will do, a couple will do, but they have to rotate strike. Now they take a cheeky single, would have been a suicidal single if the ball would have hit the stumps at the bowler's end, because Samarth was running blinded, and as soon as he connected the ball, he started running, and he was, I don't know in what mentality to take that single, because it went straight into the hands of the fielder. And on top of that, he had given up the run. He had given up the sprint because the fielder was so near that even if he would have taken a couple of paces toward the stumps, it would have been a jaunty effort to get that out. Yes. I was just going to get the John T. Rhodes point here. I mean, just run towards the wicket,
put in a forward dive and just get rid of the stumps, but the fielder could not do that, and they fortunately complete a run, and with that the partnership also moves to 50 as well, and Warriors now 70 for 1 at 8.3 overs. Avinash has been brilliant in this spell, in this over. I mean, he has been very economical. This is an in-swinging delivery that comes sharply inside into the batter from outside off. It is just dabbed towards short third region for a single. Yes, and at this point, Samarth, 42 of 29. He is batting with quite some brilliance as this time. He wants to cut the ball towards the extra covers region. A fielder would be there for his protection. He would just take a single and the score moves to 71 now. Batting has been great between these two batters, as Karun Nair knows that he is capable of those big runs, but he is making sure that Samarth, who is in a better form in this game, gets more time on the strike, as it was Samarth who was going for those big runs, who were going for those big shots, and Karun Nair is doing his responsibility of giving him the strike. 13 of 13. He was talking in singles, but this time he will talk in sixes towards the cow corners region. A lofted away shot by Karun Nair, and this is the form in which he is playing this tournament. 50 early on in the game which he played, and now a great shot. Is this shot the calling for that 50? We'll have to wait and watch, but nevertheless, it is now Karun Nair whose bat is doing the talking, and what a shot by him to get those runs. And now one end it is Samarth who is going for the big runs and the big shot, and on the other end now Karun Nair has just started. 77 on the board. We move to the last ball of Avinash. He had a better over early on, just 3 runs before that, but Karun Nair is capable of making this over not so successful with that 6, but a better comeback delivery by him. It would end in a dot. That is 77 for 1 after the 9th over. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त. यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11. क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी. तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा. आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप. क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट. Hardik Raj to continue his attack. He comes to bowl his third over, the left arm slow orthodox bowler, the prodigy, as Shaurya mentioned him. He could be a great spinner, and this time, but Karun Nair now gets his eye in and gets a boundary. He scored a maximum in the previous over, and now he gets a boundary of just the second delivery of Hardik Raj's over. Karun Nair moves to 23 runs. Samarth sits at 44 of just 31 deliveries. An exceptional shot, innovative as well, and it pays off. It is a fuller delivery, around off in middle. Karun Nair changes his stance and reverse hits it over backward point region for a boundary. Warriors now 82 for 1 at 9.2 overs. This is certainly what Karun Nair was hoping for, and certainly what Mysore Warriors were hoping for. Their skipper is turning on the heat now. He sweeps this full ball to short fine region and crosses for a quick single. Samarth now just a single hit away from his half century, his first one of this campaign. He will certainly be hoping to stick around for long in the middle and try to add on some impetus in the scoreboard for Mysore Warriors. This is attacking the pads, a length delivery. Samarth just tucks it into the vacant region at short mid wicket and takes a single. Yes, a single taken there by Samarth, and Karun Nair
who just scored a brilliant 77 against the Mangalore Dragons. Yes, they put up a score of 2-1, but it was the brilliance, I would say, a brilliance of Sarath Diyar, 111, and Nelson by him, that took the match away from the Warriors. But it was a brilliant innings, I would say, by Karun Nair. This time he comes, he shuffles around, he comes outside and wanted to flick the ball towards the deep covers region, but a fielder was present there, and just in front of the fielder the ball bounced and nearly missed the wicket, and both the batters did not take a run. I think there was some lapse of communication by both of them, and they just called that run out. I think it was Karun Nair who thought he is going to end up giving the ball in the fielder's kitty, but it just fell 85 for 1 after 10 for the Mysore Warriors. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है। 10 ओवर के पश्चात स्कोर था 85 और यहाँ पर समर्थ और करुण नायर, ये बहुत ही अच्छी साझेदारी, 50 के ऊपर की साझेदारी दोनों के बीच में हो चुकी है। और यहाँ पर एक बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक अपील थी, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। ये बल्ला अब घूम गया है करुण नायर का। ये अब नहीं देख रहे हैं कौन से दिशा में खेल रहे हैं, लेकिन जरूर उस बॉल को पकड़ने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ चुकी है और वहां पर लगभग 12 से 13 दर्शक उस गेंद के पीछे थे और आखिरकार एक बंदे ने वो गेंद उठाकर सौजन्य से वापस कर दी है। कल एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब भी एक कवर्स के ऊपर से एक षटकार मारा गया था और उस 6 रनों के बाद 2 लोगों ने सेल्फी लिया और फिर वो गेंद फेंकी फील्डर के पास, तब तक खेल रुका रहा था। इन्होंने ये गेंद फेंकी ना, TNPL में तो गेंद लेके भागते थे और बाद में सेल्फी निकालते थे। और यहाँ पर आप बोल रहे थे सेल्फी, यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ रुके हैं बल्लेबाज। अंपायर शायद कुछ बात कर रहे हैं कि कैच लिया नहीं लिया, और यहाँ पर अगर ये कैच होता है तो ये बहुत ही बड़ी विकेट है, क्योंकि करुण नायर जो अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे वो एक कैच के ऊपर अगर बाद होते हैं या फिर आउट होते हैं तो ये स्थिति जो है ये मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति रहेगी गुलबर्गा मिस्टिक्स के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी विकेट है ये। 32 रन उन्हें बनाया 21 गेंदों में। देखेंगे अगर ये कैच पूरी तरह से उनके पक्ष में जाती है या नहीं। जी हाँ, इस बार भी वही सिमिलर शॉट मारने की कोशिश की थी, शफल किया, कवर्स की तरफ लॉफ्ट कर दिया था उन्होंने ये गेंद पर। जो उन्होंने मिस्टेक लास्ट टाइम की थी वही दोहराई, इसे टाइम नहीं कर पाया और इस बार फील्डर की तरफ मार दिया। और अभी देखना पड़ेगा कि ये कैच होगा कि नहीं। विजुअल्स अभी हमारे तरफ आ रहे हैं और ये काफी क्लोज मामला है।
शायद ये ग्राउंड को टच कर गई है ये गेंद। जी हाँ, यहाँ पे लग तो वैसे ही रहा है कि फिंगर्स बॉल के अंडरनीथ नहीं थे और इसके वजह से शायद इसे नॉट आउट का करार दिया जा सकता है। जब से वो शुभमन गिल का कैच हुआ है वर्ल्ड के वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तब से बॉल हाथ में जाने के पहले या बाद ग्राउंड को छू ही रही है। तो क्या ये हो सकता है, ये उंगलियां नीचे थी, नहीं थी, ये गेंद नहीं, ये गेंद बिल्कुल हाथ में नहीं थी, ग्राउंड को ही लगी है, घास पे वो पटकी ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखते हैं तीसरे अंपायर का क्या फैसला होगा, क्योंकि वही फैसला हम यहाँ पर कॉम बॉक्स में बैठकर हमारे फैसले वहां पर नहीं अमल होंगे। देखते हैं अंपायर का क्या फैसला होगा। ओमकार, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कभी भी ना फील्डर ने अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हाँ, कभी भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज obviously whenever third umpire comes into the picture, the benefit of doubt always goes to the batter. So this time also the benefit of doubt goes to the batter, but the third umpire had evidence, a clear evidence that the ball was touching the ground and the fingers were not underneath, and hence Karun Nair still remains out at the crease. Warriors now 6 runs short of a ton. I mean the team century and not his individual one. So 94 for 1 now. Amit into his final over of into the final delivery of his first over. A short one on leg stump. Samarth flicks it to short fine leg for a single. Samarth moves to 46 and Warriors are 95 for 1 at the end of 11 overs. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा। And now it is Hardik Raj to bowl his fourth over, and we were talking about that dropped catch, but I would also applaud the fielder who did a brilliant job running from the long off region to get to that catch, and it was a very good effort by him. This time a couple quick 2 runs taken by both the batters here, and they are in a good form right now. But Karun Nair getting a lot of chances here. Before that it was the stumping, and after that it was this catch chance there, which was dropped very nearly by the fielder. The catcher plays an incredible game here. I mean, the catch that he caught earlier, he did not celebrate, he did not show it that it was grasped, but calmly just threw the ball back into play and went in for a team talk. But instead the decision went against Gulberg Mystics, and they still only have 1 wicket in their kitty. 99 runs on the board now. Samarth is looking in really good form. He has scored 47 runs so far and has been impressive in getting boundaries at will at the start of the power play. But for now, the boundaries are not coming freely as such. But still, these two are doing really good job while running between the wickets. 100 up for Mysore Warriors. The team applauds now from the dugout. The second team 50 has been much quicker. The first one took 38 balls, while the second one took 33 deliveries. And now at the end of 12 overs, Mysore Warriors are 101 for 1. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11।
क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो। अमित वर्मा आए हैं अपनी दूसरी ओवर फेंकने के लिए। पहली ओवर में उन्होंने 9 रन खर्च किए थे। यहां पर पहली ही गेंद पर दूसरी ओवर की फिर एक बार अपना स्टांस चेंज किया, एक रिवर्स स्वीप खेल दिया और वो भी हवा में, जहां पर उन्हें पता था कि बैकवर्ड पॉइंट के डीप सेक्शन में कोई फील्डर नहीं है मौजूद और करुण नायर एक अलग सी ही लीग अपने आप की खेल रहे। 41 पर पहुंच गए 27 गेंदों में और किसी ने उनको नोटिस भी नहीं किया। फिर एक बार सेम डिलीवरी, सेम शॉट, सेम रिजल्ट। ये होता है अच्छे बल्लेबाज की एक पहचान कि आप फिर वही डालेंगे और हम फिर वही करेंगे। 90 रन की साझेदारी हो चुकी है 61 गेंदों में, जहां पर करुण नायर और रवि जो है अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं। अच्छे एक उस संवाद उनके बीच हो रहा है, साझेदारी, सूझबूझ भरी साझेदारी। और हालांकि उन्हें 2 चांस मिले हैं करुण नायर को और वो बखूबी उसका बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि रन्स तो आएंगे, 200 रन बनाए थे इन्होंने ड्रैगन्स के खिलाफ, लेकिन विकेट नहीं ले पाए उनके और ये हार गए थे 5 विकेट से। मतलब 202 रन बनाए थे 18.3 गेंदों में मैंगलोर ड्रैगन्स ने और मतलब 9 गेंदें शेष थी, 5 विकेट शेष थे और 202 रन उन्होंने चेस कर लिए। तो बॉलिंग के ऊपर फिर एक बार प्रश्न चिन्ह यहां पर उपस्थित होने वाले हैं, क्योंकि रन तो बना रहे हैं बल्लेबाज। 77 रन बनाए थे करुण नायर ने गई मैच में और यहां पर रवि समर्थ क्लीन बोल्ड हो गए। स्पिनिंग डिलीवरी पर आउट ऑफ द ऑफ स्टंप पिच हुई थी, अंदर आई, खेलना चाहते थे कवर की दिशा में। जब आप लाइन के खिलाफ खेलते हो तभी आप यही करना नहीं चाहते और ये बिल्कुल आउट हो गए, क्लीन बोल्ड। और अमित वर्मा को मिली है सफलता। 91 रनों की ये जो पार्टनरशिप है, ये साझेदारी है, ये टूटती हुई ऑफ स्टंप बिल्कुल लड़खड़ा गई और ये पारी कहीं लड़खड़ा ना जाए, क्योंकि जब आपको 1 विकेट मिलता है, आप ये 13वीं 14वीं ओवर में होते हो, काफी एक अच्छा माहौल बना होता है डगआउट में और तुरंत एक बल्लेबाज आ जाता है और उसके ऊपर प्रेशर हो जाती है कि अब ज्यादा ओवरें नहीं बची हैं, मुझे क्या करना है, कि शॉट लगाने हैं। तो नहीं, जवाब है नहीं, आपको बड़ी शॉटें नहीं लगानी है, आपको वो सिंगल लेने हैं और करुण नायर को स्ट्राइक पे रखना है, क्योंकि वो 46 पर खेल रहे हैं 30 गेंदों में। और बिल्कुल सुचित को यही अब सूचित करना चाहिए खुद को कि मैं सिंगल लेने वाला हूं। मैं कितना भी बड़ा स्ट्राइकर होऊंगा क्रिकेट बॉल का और मैं कुछ भी खेल सकता हूं, लेकिन जगदीश सूचित जो अब ऊपर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि उनका क्रम थोड़ा सा नीचे लग रहा है। राहुल रावत थे, तुषार सिंह थे, शिव कुमार रक्षित थे, फिर भी जगदीश सूचित को ऊपर भेजा गया है क्योंकि शायद उनके बल्ले से कुछ कारनामों की यहां पर अपेक्षा की गई होगी। और जब आप बोल रहे हो कि कप्तान आपके साथ खेलने वाले हैं, तो और वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना कप्तान को, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं 46 पर 30 गेंदों का सामना करके। और मैं ये कहता हूं कि रवि कुमार समर्थ की एक अच्छी खासी 50 हो जाती तो उनको भी अच्छा लगता कि एक अच्छी पारी खेल के आए। लेकिन बहरहाल क्रिकेट ऐसी ही एक खेल है जहां पर कोई भी निश्चितता नहीं होती किसी भी चीज के बारे में। 48 रनों पर वो आउट हो चुके हैं, 2 बड़े छक्के लगाए थे और 4 चौके उन्होंने 48 रनों की इस पारी में लगाए थे। बहरहाल ये जो आपको जो मनोबल मिला है, जो हौसला अफजाई आपके कप्तान ने की है आपके संघ के लिए, ये बड़ा शॉट मैं क्या कह रहा था कि सिंगल लेना है, डबल लेना है, नहीं स्ट्राइक ही नहीं देनी है, मतलब खुद के पास नहीं रखनी है तो मैं सिंगल क्यों लूं, मैं ना 6 मारूं आखिरी गेंद पर और इस ओवर को और ज्यादा खराब करूं। 15 रन इस ओवर से आते हुए 24 रन दे चुके हैं 2 ओवर में अमित वर्मा। 116 2 विकेट के नुकसान पर है मैसूरू वॉरियर्स 13 ओवर के पश्चात। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल,
क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। यहाँ पे 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है और 117 रन 2 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पे जगदीशा सुचित जो नए बल्लेबाज आए उन्होंने किया है अपनी पारी का वेलकम एक छक्के के साथ, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी और वो इसीलिए प्रमोट किए गए हैं उनके टीम से इस पोजीशन पे खेलने के लिए, क्योंकि अभी सोच रहे होंगे मैसूर वॉरियर्स की हमने 201 बनाए थे पहले गेम में और वो हम डिफेंड नहीं कर पाए, तो इससे कितने ज्यादा रन हमें बनाने चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी तो जरूर दिख रही है यहाँ पे। बल्लेबाजी की कैपेबिलिटीज मैसूर टीम में है, तो वो उनका जो पाला है, जो बल्लेबाजी का उनका जो टीम है वो एक अच्छा काम कर रहा है। पर अभी जो बॉलिंग साइड है उनके ऊपर एक टेस्ट हुआ कि यहाँ पे हमारे बैटर्स ने काम किया है, यहाँ पे हमारे कप्तान ने रन बनाए हैं, यहाँ पे ओपनर ने भी रन बनाए हैं, तो अभी हमें इस टोटल के डिफेंसिवनेस के लिए काम करना पड़ेगा। 120 हो चुके हैं यहाँ पे 14वीं ओवर पे रन, तो रन तो जरूर आ रहे हैं। और करुण नायर, आप ओमकार कह रहे थे कि वही एक इसके पहले ओनली बैटर थे जिन्होंने 50 मारी है इस टीम के लिए टूर्नामेंट में, पर अभी हमको लग रहा था कि रवि कुमार समर्थ वो कर पाएंगे, पर 2 रन से चूक गए। खैर, उनकी 50 होते हुए दिख रही है, उनकी सेकेंड 50 आ गई। 33 50 ऑफ 33 उनके बल्ले से। पहले थोड़े स्लो जा रहे थे, पहले रवि कुमार समर्थ को बैटिंग करने दे रहे थे, पर उसके बाद उन्होंने जैसे ही चार्ज लिया वो बॉलर्स को ही चार्ज करने लग गए। काफी बढ़िया पारी एज अ कैप्टन उनकी, और वो होप करेंगे कि यहाँ से वो और 50 उसमें ऐड कर पाए। खैर, यहाँ पे सुचित बल्लेबाजी करते हुए और वो एक सिंगल को डबल में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, पर कप्तान ने कहा जी नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं रखूंगा स्ट्राइक यहाँ पे। तो आखिरी गेंद ये ओवर की, और 122 for 2 है स्कोर बोर्ड पे। ये अभी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम स्लॉग ओवर्स की तरफ जा रहे हैं, 2 ही विकेट गए हैं, 2 ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रन काफी है वो विकेट के सामने 122। तो अभी यहाँ से कैसे वो अप्रोच लेते हैं करुण नायर और उनकी टीम। इस बार वापस रिवर्स स्वीप कर दिया है और वापस वही बाउंड्री। ये शॉट उनका हर बार चलता है भैया। चलो, ये ओवर की हुई समाप्ति। 126 for 2 है मैसूर वॉरियर्स। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन
हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। डाउनलोड। Abhilash Shetty, the bowler who started the proceedings for the Mystics, is back into the attack, and the left-hander Suchit gets it towards the backward square leg region for a single, getting a Karun Nair on strike. I apologize. Karun Nair on strike, 54 of 34 to Karun Nair, 127 for 2 in 14.1. They've got these runs pretty fair and square of a good attack being set. So almost at 8 runs per over, 8.96 now to be very, very precise for that scoring rate. 48 to Ravi Kumar Samarth of 38 deliveries. Kodand Ajit Karthik getting on a good delivery from Abhilash Shetty up frontly for 13 in 9 deliveries. But then on Karun Nair and Ravi Samarth, they built on this partnership, and 91 was the partnership between them to just get them to 128 for 2 here. Karun Nair, he has been a good striker of the cricket ball, and if you remember the reverse sweeps that he played today, they were very, very a treat to watch. You know, he always gives you an impression of himself that he can be a deceptive batter. You don't work for players like him. You work for players like Ravi Kumar Samartha. You work for players like Jagdish Suchit, who can be table turners, but sometimes you leave this question as an omission or an option, and majority of the question papers has those questions in it, and you are answerless. And Abhilash Shetty is giving out those half volleys to Jagdish Suchit or Karun Nair. They'll just take it very, very appreciatively. Yes, now it is. I think Suchit, because he has been promoted, he should continue this loggery. I would say it is not a word, but I might just put it up. The loggery which was started by Karun Nair, who was going for the big shots, and he should also add up to this, as this time he wanted to pull the ball well, but it was a very, very quick bouncer by Abhilash there. He would get a warning for a second one, but it wouldn't be a wide. It is Suchit who is asking the umpire why not, because it just nearly went over the helmet, and the umpire said no, but nevertheless it is a dot. 130 has been up on the board, and in the earlier over it was 120. So the run rate quite so well with the team, with the Warriors. And Suchit would be wanting to add up, as this time he goes towards the long off region and he clears the boundary with a lot of connection, and also a lot of pizzazz, as he was looking brilliantly in that shot. What a shot played by him, and just lofted it above, used his shoulders to his might, and that just went clearing the boundary quite so well. Exceptional shot. And the reason that he has been pushed up the order is to hit these balls, and he has certainly been able to put all the bad balls away that are coming his way, and he has moved up to 17 runs with just 2 sixes including 2 sixes. I mean, Abhilash now into his final delivery, a short one outside of Suchit. Wow, what a stunning catch. This is out of nowhere. Incredible. The fielder is pumped up, and he knows that this is a huge wicket. Abhilash comes into the attack and strikes on the very last delivery. Suchit, who was looking very positive for the Warriors, has to walk back. It was a short ball outside off. He tries to pull it, but does not get the cleanest of connection. The fielder heads it, dives forward and takes a brilliant catch into his palms. I mean, he couldn't have collected it any better, and for now, certainly he has managed to kept it in the air as well, and he has not grasped it. So at the end of 15 overs, Warriors are 136 for 3. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल,
क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिककॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिककॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे। 16वीं ओवर यहाँ पर चल रही है और 3 रन यहाँ तक आ चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी हैं 16वीं ओवर के, 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या कहने, 8.87 ये प्रेजेंट रन रेट है और अगर इस हिसाब से जाए तो 180 तक जा सकते हैं। और मैं तो सोचूंगा कि ये चाहेंगे कि 200 तक जाएं, क्योंकि एक दिन पहले ही इन्होंने 201 रन बनाया था और वो चेज किए थे उनकी प्रतिस्पर्धी टीम ने। यहाँ पर अच्छी शुरुआत है, ज्यादा विकेट नहीं गंवाए हैं, क्योंकि आप अगर 16वीं ओवर की बात करें तो आपने केवल 3 विकेट गंवाए हैं। करुण नायर अभी भी आपके जो मेन बल्लेबाज हैं वो क्रीज पर हैं। मनोज भंडगे जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं वो अभी आए हैं साथ देने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी अगर कुछ सकारात्मक दे आपको तो आप जरूर उसको
स्वागत करेंगे। मनोज भंडारी 2 रन पर अभी खेल रहे हैं, करुण नायर अभी स्ट्राइक पे हैं, आखिरी गेंद है 16वें ओवर की, 140 रन बन चुके हैं। यहां से मैं चाहूंगा कोई भी बल्लेबाज अगर सामने खड़ा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करुण नायर को देने की कोशिश करे। इस गेंद पर भी अगर एक छक्का या चौका लगता है तो ठीक है, नहीं तो 1 रन लेकर आपको, अगर आपकी विकेट भी गंवानी पड़े डेंजर एंड पर भागने के लिए, तो आपको करुण नायर को स्ट्राइक देना बहुत ही जरूरी है। ये हवा में मार दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, कैच हो सकता है, हाँ बिल्कुल कैच। और ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश में थमा बैठे हैं, एक बहुत ही आसान सा कैच। हार्दिक राज जो वहां पर लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, और पारी होती है समाप्त 57 रन पर 39 गेंदों पर, 2 छक्के और 5 चौके के साथ खत्म होती है। उसी के साथ 16वीं ओवर भी 140, अब 4 विकेट के नुकसान पर मैसूरू वॉरियर्स। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिककॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिककॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना,
But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिक कॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। Anyways, continue to enjoy what you will. Hello. 142 for 4. Now Warriors in a fix. The fix is they have lost their captain, they have lost their main striker, and they were eyeing at 200 at a certain point. Two new batters have arrived, and both of them have that responsibility to lead, which was started by Karun Nair, both Manoj and Shiv Kumar Rakshit. Both of them new batters, and they now have been asking to score those runs, score those more 60 odd runs, as we are currently in the 17th over, and it is now Bhandage who is trying to strike and trying his levels best to get this fix to be cleared, as he wants those big runs, he wants those big shots, but timing is not working, and Vijay Kumar Vyashak is just bowling his levels best. This is his third over and just 15 runs given this time. 15 runs, and Vyashak bowling his fifth delivery, pulled away by Rakshit towards the cow corners region. It would be just a single, and the over itself have been 1-1-0-1-1. So 4 runs in this over, and it's been 12 balls, 2 overs since a boundary. So now it is some pressure building upon Manoj Bhandage and Shiv Kumar Rakshit, as they are the two new batters, and they have the capability and strive to bat. The run rate falling and faltering after the wicket of the captain. Last ball of the 17th over, it has been bowled by Vijay Kumar, and this time it has been hit towards the cow corners region. It would be just a couple of runs to end the over. It is 146 for 4 after the 17th over. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिक कॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिक कॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिक कॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिक कॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज
Yes, and now we start the new over, new bowler, and it is all upon the runs now. The scoreboard is currently at 146, and this over has been started off with a sixer. So it moves to 152 for 4, and it is Rakshit who is trying his level best to get those odd runs, and it is D. Avinash who is bowling his last over. और यहाँ पर बल्ला घुमा रहे हैं और रन जितने आएंगे उतने आप स्वीकार करोगे, क्योंकि एक समय पे लग रहा था कि आप 180 190 तक, और यहाँ पर इम्पैक्ट सब हुए हैं केपी अप्पन्ना और उनके जगह पे आए हैं सौरभ मुत्तुर, तो ये शायद बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त होंगे। और इसी के साथ ये इम्पैक्ट सबका जो एक पूरा अलग चित्र आ जाता है। काफी आशंकाएं हुई थी कि इसके वजह से आपके ऑलराउंडर्स की जो महत्वता है वो कम हो जाएगी। स्वायत्ता आप रखते हैं गेंदबाजी या बल्लेबाजी में। बहुत ही बढ़िया साइड स्क्रीन में छेद करता हुआ 6 रनों का ये बहुत ही बेहतरीन नजारा। शिव कुमार रक्षित रक्षा करने आ गए हैं अपने संघ की, और उन्होंने कह दिया है भंडगे को कि लीजिए जनाब, आप भी इन शॉटों को खेल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही ये सारे रन नहीं बना पाऊंगा। जब आप एक लेफ्ट हैंडर बैटर को देखते हैं ना ये सारे शॉट्स खेलते हुए, तब आपको ना एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के साथ एक विशेषण हमेशा जुड़ता है अंग्रेजी में, वो है एलिगेंस, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। टाइमिंग में बहुत ही माहिर होते हैं ये लेफ्ट हैंडर्स, और इतनी खूबसूरती के साथ लेफ्ट हैंडर्स खेलते हैं कि जी करता है कि देखते ही रहें। और एक बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडर की याद मुझे आ गई इस माहौल में, कि उनका नाम है ब्रायन चार्ल्स लारा। मैं जानता हूं, मैं वो मैच देख रहा था पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज का, जहां पर दानिश कनेरिया ने उनको कुछ कह दिया था, और फिर उसके बाद जो हुआ 30 रन उन्होंने बटोरे दानिश कनेरिया की उस अगली ओवर में, और कह दिया कि भैया आप नए हो, हम यहीं पर जन्म लिया है हमने क्रिकेट पिच पर ही। तो ब्रायन लारा हुए, सौरव गांगुली, या फिर अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट में क्रिस गेल और एक अच्छी तकनीक वाले ग्रैम स्मिथ मुझे याद आते हैं। माइकल बेवन एक बहुत ही शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। तो ये एक अलग लेगेसी थी लेफ्ट हैंडर्स की। और सनत जयसूर्या जिन्होंने वो 30 यार्ड सर्कल को डिस्क्राइब कर दिया कि ये नहीं होता, ये अस्तित्व नहीं है क्रिकेट में। बॉल गेंद जो है वो चौके और छक्कों के लिए ही जानी चाहिए। यहां पर एक बहुत ही अच्छी, और मैं क्यों भूल गया वो नाम में आ ही रहा था उसके ऊपर, जिन्होंने 6 गेंदे 6 छक्के लगाए थे। पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी टीम इंडिया, और जैसे ही स्टुअर्ट ब्रॉड को वो चौथी गेंद पर जो फुल टॉस थी आउटसाइड या ऑफ स्टंप पर, उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से खेल दिया छक्का। तो मतलब दूसरे छोर पर यहां पर इस मैच के बारे में बात करते पहले उस शख्स का मैं नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन 19वीं ओवर में 18वीं ओवर का ये समापन हो गया है। 6 1 22 6, फिर 2 सिंगल और 4, कुल मिलाकर 12 13 15 और 17 रन आए। 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट लिया डी अविनाश ने, और 18 ओवर का पतन यहां पर 165 4 विकेट के नुकसान पर मैसूरू वॉरियर्स। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में, और हर हफ्ते क्रिकेट,
से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिक कॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will see. Abhilash comes back into the attack for his final over. He has been brilliant for Mystics so far, and he has picked up 2 wickets. But right now, he hasn't started the final over of his spell in a in a manner that he would have envisioned. He starts off with a wide, a loosener of he spills it way outside the tram line, outside off, and the second delivery he offers width again, and this time the batter is able to capitalize on it and pounce and just smoke it over the bowler's head for a maximum. I mean, the hang time of this ball was incredible. It was in the air for a long time, but had enough distance on it to beat the fielder. It's a low full toss, wide outside off again, and again, once again, it is all the way for a maximum. The umpire lifts both his arms, and Abhilash is being taken to the cleaners here in the final over of his spell. Rakshit is certainly turning the tide in favor of the Mysuru Warriors. What a brilliant batting performance this is turning out to be. Rakshit has scored 21. Rakshit has been incredible. I mean, these 2 back-to-back sixes are just... Rakshit has scored 21 runs off 7 deliveries so far and 3 sixes. I mean, 18 runs coming off from the boundaries, and he has just run 3 singles, or maybe a double and a single. I mean, whatever the combination is, all that matters is a boundary. Rakshit goes hunting for another one, but this time it catches the outside edge and it flies to the keeper, and the Mystics keeper does not make a mistake here. Abhilash picks up his 3rd wicket. Mysore Warriors now 178 for 5. Will this bring a halt to the run flow of Mysore Warriors, or will Gulbarga Mystics be able to pick a couple more wickets in the remaining 9 odd deliveries that are remaining? A brilliant catch by others, an easy catch. I feel he settled down under it and made no mistakes whatsoever. Abhilash has been brilliant with the ball. He started off poorly in this over, but he certainly has made a effective comeback with a wicket taking delivery. Tushar now is the new batter at the crease. Yes, and at this point, Tushar will be having that responsibility to continue what was started there by Shivkumar Rakshit. And Shivkumar Rakshit, first, let's talk about this over, Abhilash's last over. It started off with a wide, then 2 sixes back to back, and then the last laugh was with Abhilash as he got that wicket and he got his man. And Prajwal, a brilliant catch by the keeper, who was behind the wickets, doing a very brilliant job, Adarsh Prajwal. Yes, he had made that one odd mistake against taking that stumping of Karun Nair, but now all that has been forgotten, and it is this wicket that matters to him. 178 for 5, and we're moving towards the second last ball of this 19th over, and it has been just taken in as a single. Tushar and Manoj Bhandage will be having the responsibility to get this match at least till the 190 ticker, as we're moving towards the last over after this ball, and it is Manoj who has been batting since quite a long time. 9 deliveries. I mean, 9 deliveries aren't a lot of time, but with the experience compared to Tushar, it should be Manoj who should be given the strike. And now it is Abhilash Shetty who is preparing for his last ball. A great performance by him. 3 wickets he has gotten. He has been expensive as well. 43 runs, but the wicket marker in this in his personal scoreboard would be something he would be looking upon, and he is just changing a feel. He is making some slight changes here and there,
and it is Manoj who's on the bats. Last ball of the over, and Manoj just hits that ball, clears the field towards the cow corners region again, and gets his sixer in the end of the 19th over. It is 185 for 5, and it is game on, says Warriors in the last over. क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो आखिरी 6 गेंदें बची हैं यहाँ पर 185 5 विकेट के नुकसान पर, और पहली गेंद पर वैशाख आए हैं अपनी चौथी ओवर करने को, इस पारी की आखिरी ओवर फेंकने के लिए, और 19 रन उन्होंने दे चुके हैं अब तक इस सिंगल को अगर गिने। और भंडगे बहुत ही अहम है ये भंडगे का क्रीज पर और स्ट्राइक पर रहना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की अब कोशिश होगी। 186 बन चुके हैं, क्या 200 का आंकड़ा यहां पर पार कर सकते हैं? ये एक सोचने वाली चीज होगी, क्योंकि अच्छी मेहनत की है। नहीं कह सकते कि मेहनत कहीं पर कम गिरी है। हाँ, होता है अक्सर T20 में, हम देखते हैं अच्छी शुरुआत होती है, फिर विकेट जाते हैं, फिर एक बार वापसी का मौका मिलता है। वहां पर अगर आप अच्छा कर सके तो ठीक है, लेकिन वहां पर भी अगर आपने अच्छा खेल नहीं दिखाया, दमखम नहीं दिखाया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस रनों की गति को अगर हम देखें सीधा, और ये ड्रॉप कैच यहाँ पर डीप मिड विकेट की रीजन, नहीं डीप मिड विकेट नहीं, ये डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, यहाँ पर माफ कीजिए, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज से मैं थोड़ा सा खो गया, और वहां पर चेतन जो इंपैक्ट सब है शायद, नहीं ये तो है 11 में ही, तो वो एक छूटी हुई कैच क्या आपको ज्यादा रन दे सकती है? बिल्कुल एक कंफर्टेबल हाइट पे थी, लेनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पर कॉम बॉक्स में बैठकर सिर्फ जज कर सकते हैं। उस वहां पर फील्ड पर कभी कभी आपके आंखों में लाइट्स की रोशनी आ जाती है, कुछ अनकहे या अनसुने बातें हो जाती हैं, और ये बीमर था, और सीधा सीधा सॉरी बोल रहे हैं बल्लेबाज को ये गेंदबाज, और पूछ रहे हैं कि भाई आपको कहीं लगी, क्योंकि मैंने इंटेंशनली नहीं डाली थी, हो सकता है क्योंकि पसीना कभी कभी आपके हाथ में रह जाता है, और सीधा आके उनको लगी गेंद, और तुरंत भाग के आ रहे हैं वहां पर फर्स्ट एड देने के लिए डॉक्टर साहब। और ये बहुत ही अच्छी बात है जब आप एक दूसरे को जानते हैं, आप लोकल क्रिकेट एक साथ खेलते हैं, आपके स्टेट के लिए एक साथ खेलते हैं रणजी में या लोकल लीग्स में, तो यहाँ पर आप एक दूसरे को अच्छी खासी तरह से जानते हैं और आप एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। और यहाँ पर ये नहीं, मतलब ये गेंद कोई जानबूझकर नहीं करेगा, कंधे पे शायद आकर लगी उनके और सीधे नो दे दिया। कंधे के लेंथ पर ही थी शायद, पहले उनके आर्म को ब्रश हुई और फिर उनके कंधे को जाके लगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बल्लेबाज के लिए। लेकिन मैं फिर एक बार वही कहूंगा, जानबूझकर कोई ये गेंद ऐसी गेंद नहीं करता। हम नहीं जानते हैं कि कितने अच्छे युवा खिलाड़ी इस गलत गेंद का शिकार हुए हैं, और इसीलिए मैं ये दोहराता हूं कि कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा। इसलिए सारे नीले खिलाड़ी जो है, नीले यूनिफॉर्म में जो गणवेश में वहां पर फील्डिंग कर रहे थे आसपास, वो आ गए, और ये हंसी जो बैट्समैन के चेहरे पर दिख रही है वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भंडगे अब ये फ्री हिट का कितना अच्छा उपयोग करते, ये देखने वाली बात होगी। 25 रनों पर खेल रहे हैं 12 गेंदों में, और अभी बॉलर थोड़े नर्वस होंगे, क्योंकि अगर वापस छूट गई तो एक तो उनको फिर बॉलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, पहली बात, और दूसरी बात उनको ऐसी गेंद करनी है जहां पर रन भी नहीं निकले, और ऐसा है कि बैटर आउट भी नहीं होगा सिवाय रन आउट के। अगर आप भागते हैं और बीच में रुक जाते हैं, जैसे करुण नायर और रवि समर्थ के बीच में हुआ था कि उन्होंने खेल दी थी और रन ही नहीं लिया, तो ऐसा नहीं हो, यहाँ पर रन मिले या फिर
अच्छा कुछ हो इस फील्ड पे, मार दिया है कवर्स की दिशा में, वहां पर सेम फील्डर है और इन्होंने अब तक रोक लिया है 2 रनों का इजाफा इस स्कोर में और 190 का आंकड़ा पार कर लिया। 191 बन गए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदें शेष, 91 रन बनकर 200 का एक साइकोलॉजिकल मानसिक तनाव पैदा करने को या निर्माण करने के लिए सज्ज है यहां पर मैसूरू वॉरियर्स की टीम और खास करके मनोज भंडगे। Certainly, they can have the psychological advantage once they get the 200 runs on the board. They are just 9 runs short here, and Bhandage is trying his level best to do whatever he can and get his side to near that run mark, 200 run mark. 3 balls remaining now. A low full toss. Bhandage drills it straight down the park, dissects the fielder in the at long off and long on. No one had a chance there, and it rolls over the boundary ropes. 195 for 5 now. 2 balls remaining. Bhandage moves to 31 with this boundary. Tushar hasn't been able to perform his level best because he has only faced 3 deliveries so far. But I'm certain whenever if he gets the strike in this over, he will certainly hand it back to Bhandage, who is looking in formidable form out there. Just 2 balls remaining here. Bhandage will hope to get one more boundary of these remaining 2 overs and get that psychological advantage that Swapnil was talking earlier about, and Mysuru will certainly have the momentum walking back into the break. But this is way outside the timeline and it is signaled as wide, so just extras, just freebies for Warriors, and they wouldn't mind it at this stage. Still 2 balls remaining at this Vaishak spell. He hasn't been brilliant with the ball throughout this innings. He has not picked a single wicket yet. He has gone for almost 30 runs in his 4 overs. Not that economical as well. He has been leaking runs whenever he has come into bowl. So Bhandage now takes the strike. He is ready to put this out of the park, but will he be able to? We will have to wait and watch. He isn't able to put it away. It is a full length delivery out on 4th stump. Bhandage tries to heave it across the line, but it takes the toe end of the bat and heads down to long on only for a single. Tushar now on strike for the final delivery. 197 on the board for Mysuru Warriors. Their fans are certainly loving it. Some fans are cheering and showing thumbs up to the camera when they can see themselves on the big screen here. Certainly a joyous moment for every spectator when they visit a stadium to watch any match. Final delivery now. Vaishak has given away 30 runs of 3.5 overs. Tushar now on strike with 2 runs. Will he be able to end it on a positive note for his side? Vaishak trying his level best to adjust the field and try to ball according to his field here rather than just playing with the mind of Tushar, who is a middle order batter for this Warrior side. It is a Yorker length delivery on middle. Tushar helps it back towards the bowler. Vaishak gets a hand on it, but allows the batter to take a single. 198 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का ये पहली पारी का खेल समाप्त। यहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था गुलबर्गा मिस्टिक्स ने, वो उनको 198 रनों के लिए भारी पड़ा है और देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करेंगे वो जब चेस करने आएंगे। 199 रनों की जो जरूरत होगी 120 गेंदों में, लेकिन वो 198 रन कैसे बने। वहां पर 7 अतिरिक्त रन तो थे, 4 वाइड्स, 1 नो बॉल, 1 लेग बाय और 1 बाय, लेकिन बाकी के 191 रन कैसे बने। 48 रन बनाए रवि कुमार समर्थ ने, 13 रन बनाए कोदंड अजीत कार्तिक ने, 57 रनों की बहुत ही अहम कप्तानी पारी खेली करुण नायर ने, जगदीश सूचित 17 रन, मनोज भंडगे बहुत ही अच्छे नाबाद रहे 32 रनों पर 15 गेंदों में, शिव कुमार रक्षित एक अच्छा कैमियो खेले, वो 8 गेंदों में 21 रन बनाए, और तुषार सिंह जो नाबाद रहे 3 रनों पर 4 गेंदों में। एक अच्छी खासी ये बैटिंग लाइनअप यहां पर प्रदर्शित होती हुई। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत की थी यहाँ पे अभिलाष शेट्टी ने, 4 ओवर डाले, 49 रन दिए, 3 विकेट। अभिलाष शेट्टी ने जो 3 विकेट लिए उससे वो टॉप लीडिंग विकेट टेकर भी बन जाते हैं इस टूर्नामेंट में।
विजय कुमार व्याशक 4 ओवर डाली, 31 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए वो। हार्दिक राज जो स्पिनर है उन्होंने 4 ओवर डाली, 26 रन दिए। केपी अपन्ना जो सब आउट हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने एक सब इन हुए यहाँ पे, 1 ओवर डाली और 11 रन दिए। यहाँ पे दी अविनाश 4 ओवर डाली, 45 रन दिए और 1 विकेट ली। अमित वर्मा 2 ओवर डाले, 24 रन दिए और 1 विकेट ली। और मैकनील नोहरा ने 1 ओवर डाली और 10 रन दिए। तो ये थी पारी गेंदबाजी की और 198 रन्स है जो मैसूर ने बनाए हैं। 199, 200 तो नहीं पहुंच पाए पर 199 वो जो ऑफर रहता है ना, वैसा ये लग रहा है। क्या ये गुलबर्गा मिस्टिक ये ऑफर ले पाएगी, ये मैच जीत पाएगी कि नहीं, ये तो हम देखेंगे मिड इनिंग्स के बाद। तब तक आप सुनिए हमारा मिड इनिंग्स के न्यूज फिलर्स। You are listening to Flash News, brought to you by Cricket. Hello cricket enthusiasts from all corners of the globe. Welcome to another riveting episode of Flash News. I'm your host Isha, and today we are diving straight into the heart of cricketing stories that have everyone talking. So, fasten your seatbelts because we are about to embark on a roller coaster ride through the latest cricket news. Ladies and gentlemen, it's not every day that we witness a Bollywood superstar make a heartwarming sacrifice for a cricket franchise. The incredible Akshay Kumar has revealed his remarkable act of generosity from back in 2009. In a new book by Amrit Mathur, Pitchside, My Life in Indian Cricket, the story unfolds. Akshay terminated a substantial contract with Delhi Daredevils, now Delhi Capitals, to assist the struggling IPL franchise in managing losses. Can you believe it? His willingness to forgo promotional shoots, meet and greet events, and corporate appearances speaks volumes about his commitment to the team. This awe-inspiring act reflects Akshay Kumar's extraordinary character and his love for the game beyond the silver screen. What a true legend! Cricket fans, let's talk about the intriguing take from none other than Sunil Gavaskar on India's T20I series against West Indies. In a boys versus men analogy, Gavaskar delves into the performance of India's young guns against a seasoned West Indies squad. Gavaskar's observations strike a chord as he explores the transition from franchise cricket to the international stage. It's a whole new ball game where pressure and expectations take center stage. And while some may shine at the boys level, the step up to men's cricket can be a steep climb. A thought-provoking insight from a cricketing legend. Cricket fans, imagine a snake making an unexpected appearance on the cricket field during a match. That's the scenario that's been gripping the Lanka Premier League. And guess who's chimed in with his perspective? Ravichandran Ashwin himself. In the midst of this wildlife drama, Ashwin speaks up for nature. He points out the challenge cricket authorities face due to the close proximity of forests in Sri Lanka. It's a unique perspective that reminds us of the harmony between sport and nature, even in the midst of surprising interruptions. Get ready, cricket buffs, because Pakistan's cricket team is undergoing a seismic shift in their ODI approach. With the Asia Cup and World Cup on the horizon, Pakistan is aiming for an aggressive playing style in the ODIs. Inspired by their recent success in Test cricket, the team is determined to replicate their winning formula in the shorter format. Players like Salman Ali Agha and Abdullah Shafiq are all in on the strategy. It's all about middle-over mastery and amping up the run rate. With arch rivals India in the mix, Pakistan's fresh approach is sure to make the contests even more intense. Stay tuned to witness this exciting transformation on the field. Cricket lovers, mark your calendars and get ready to secure your seats for the ODI World Cup 2023. The ICC has officially kicked off the ticket registration process,
allowing fans to express their interest in being part of the cricketing extravaganza. And guess what? The ticket sales are going live on India's Independence Day. Talk about a celebration. The process is fair and square, with a lottery system to ensure everyone has a shot at catching the action live. With matches spanning across 12 cities in India, the World Cup promises an unforgettable cricketing experience. So, cricket fans, don't miss your chance to be part of history. Cricketing journeys are often filled with surprises, and Ishant Sharma's ODI debut tale is no exception. Picture this: a young Ishant lands in Ireland, ready for his debut, only to realize his kit bag is missing. But guess who comes to the rescue? None other than Zahir Khan. Zahir's generosity shines as he lends Ishant a pair of size 11 shoes so he can play the match. Talk about camaraderie and sportsmanship. This heartwarming tale showcases the unity within the cricketing fraternity and the spirit of lending a helping hand when it's needed the most. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage you to share your feedback through our interactive chat option. It's time to take your fantasy team selection to new heights and dominate the competition like never before. And that's a wrap, cricket aficionados. We have journeyed through tales of sacrifice, nature's interventions, and strategic transformations on the cricket field. I'm Isha, your guide through these captivating stories, and I can't wait to bring you more thrilling updates in the next episode of Flash News. Until then, keep your cricket spirit alive and your enthusiasm soaring high. This is Flash News, brought to you by Crickong. And the chase begins here, and the two batters are out there in order to get their team to a good start, as Prajwal, the opener, is there out to face some fierce bowling that will be applied. Yes, they are fierce, with Venkatesh M starting to bowl the first delivery of the second innings, but they also have to keep in mind that they are defending a total close to 200, and the first ball is way outside the off stump line.
away from the batter, taking it for a first extra run of this second innings. And this will be a test for their bowlers to defend these runs, because in the first match where they got 201 run, they failed to defend it, and Chetan and Adarsh Prajwal are there to bat out for this 199 they are expected to get, while he pulls the ball towards the deep mid-wicket region for the first run off the bat. And LR Chetan along with Adarsh Prajwal have started the proceedings with the bat, where Venkatesh M is the bowler for the Mysuru Warriors team, and they will be expected to at least defend this 198 runs. But also the Gulbarga Mystics will be expected to get those 199 which are required to win, because here, if at all there is a positive that they can take on this note, is the boundary that has been come. What a cut shot that is! Beautiful looking cut shot, and this is the start which is required here. And Adarsh Prajwal pouncing on the first delivery that he faces. This is the second delivery of the over, because the first one was a wide outside the off stump. Second one was pulled towards the deep mid-wicket region by LR Chetan for a single, and then Adarsh Prajwal gets a cut shot towards the boundary line. The fielder was there at the extra covers region, was not able to cut it before the ball reached the boundary line. Once again, outside the off-stump line, a wide. 7 runs on the board with 2 extras and a boundary. Just that important thing I was talking about is, you as a bowler will have to try and curtail these outflow of runs, because if you don't allow yourself to be confident enough to make sure that the runs are scored, it will be difficult for them to curtail those. And why not will the batters? They are going to go for those big hits. They are going to connect, and they are going to take it towards the boundary line. Every now and then you miss a delivery, you will get some questions against your batting, but you need to keep calm, because there will be instances where you will be able to score more runs than you anticipate in an over. But if you get carried away by those, you get into a pressure zone, where you get into a zone where you think that, oh, I have missed 2 deliveries, I need to get those runs quickly, you will falter with your intention of getting towards 199. Don't think about 199 every now and then. We say that. Think about the first 10. Then when you get the first 10 runs, you think about the next 10 and take 10 runs or 10 deliveries, 1 over at a time, and you will be very, very motivated when you, just take care of small goals. You get into a zone where you will be motivated to get another goal. Set up another goal, achieve it. Set up another goal, achieve it. Achievement of small goals gives you more momentum in the run chase, especially. And this is the reason why big players do not think about the final score. They think about the first 10, the second 10, and hence they succeed very, very prominently. 7 runs on the board in the first over towards the leg stump line. Not a delivery that he should be bowling here. And he's bowling everywhere. He's bowling everywhere, literally. 5 wides now, taking the total to 12 runs. And the captain will not be happy with the effort of M. Venkatesh in the first over. He's given up 12 runs, out of which 7 have been wides, out of which 1 is a 5 wide ball. So that is somewhere, it is important for a bowler to stick to basics, bowl that outside the off stump line, and be sure of curtailing those runs, not allowing the batters to score freely. You're defending 199, all right, but you're defending 199 for a team where you have conceded 202 in the first outing against the Dragons. And there, if you're bowling in that pressure, you will not succeed. If you will bowl with a clear mindset that you're bowling some good deliveries, basic deliveries, are not allowing the batters to score, these 6 overs are going to be crucial, because those 6 overs, the 36 balls,
set the tone for the match. But if at all there is no pressure and no questions asked by the bowling, it will be a difficult situation for the bowlers. Now a boundary behind the point region, and there is no protection in the deep towards the placement of that shot was so perfect that even a fielder could have not stopped at 18 runs of the first over. That is a very, very nice start for the Mystics team. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum. Yes, and it is the Gulbarga team who has started off quite so well, 20 runs already on the board, and that would be mostly due to the thanking of a lot of extras by the bowler in Venkatesh. And he wouldn't be happy, the captain wouldn't be happy, and this is the trend which the Mysore team would be wanting to break. And this is a very great shot by LR Chetan, a perfect cut towards the deep point region, gone for a boundary, and the runs are in flow here. The power play is going till this point perfectly for the Gulbarga team, who are the defending champions. And it is that defending champions strive that is helping them. That is the valor which is helping them quite so well this time. A better delivery by Sujit, a spinner, bought in the second over itself. So the captain wants a breakthrough here, and a breakthrough as quickly as possible. This time again, the ball is cut towards the point region, but the fielder would be perfectly grabbing that, and just a dot it will be in the end. 24 runs already on the board, and Mysore faltering as they did early on. A big total was put up on the board by their team. Last time it was 201, this time it was 199, but still the bowlers couldn't defend that, and this time a cheeky single taken by both the batters to end the over. It is 25 for no wickets lost after the second over. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Karthik CA now gets the ball in hand and goes for a welcome boundary on his very first delivery. Mystics have been lethal with the bat here. They are not letting the new ball bowlers settle early on in this innings, and this is the ideal start for the defending champions inside the power play. LR Chetan has been in sensational form. He has gotten 2 boundaries in his kitty so far, and what a promising asset he is. I mean, he was close to signing for Kolkata in the Indian T20 league, but could not get his contract to play for the most watched league in the cricketing world. But certainly he is capable enough of putting up a solid performance here in this campaign, and maybe we can see him in in one of the 10 teams that compete in the Indian T20 league soon. And once again, this is high, this is huge, but it lands safely. Some luck now with with Prajwal, the wicketkeeper of the Mystics. I'm sorry. It's a lend delivery on middle. Adarsh pulls it towards the deep mid-wicket region and gets it to land safely between the 2 fielders who were converging for the catch, and they come back comfortably for the second run. 2.3 overs gone. Mystics are 32 for no loss. A low full toss now, a bit of an outswing as well, but Adarsh is able to flick it into the leg side for a quick single. This is really good running. Brilliant running. I mean, these 2 batters are consistently hitting the balls in the gaps and are being able to rotate the strike quite conveniently. And MYSW Warriors haven't been able to really pressurize the batters early on with the new ball. I mean, we saw that Warriors got some movement with the new ball, but they were unable to maximize it right now. I mean, the conditions have certainly changed a bit. Another single now as it is played towards mid-wicket. Karthik has been taken for 9 runs here off his 5 balls so far. I mean, not an ideal start with the ball. He would have been happier if he could have not conceded the boundary of the very first delivery, but that wasn't the case. Just the final ball of the over, and Adarsh tries to end it in the similar fashion that he started it, but is unable to find the boundary here. A single to end the over. At the end of 3 overs, Mystics are 36 for no loss. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. 6 रनों के साथ किया है इस ओवर का आगाज. यहां पर इंटेंशंस काफी क्लियर हैं एलआर चेतन और आदर्श प्रज्वल के, और 42 रनों पर पहुंच चुका है ये कारवा जो पीछा कर रहा है 199 रनों का. ये रन आएंगे. आप अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से इस चेस को, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को सतर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है. ये बिल्कुल सीधा खेल दिया है. कोई भी फील्डर, कोई भी खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में नहीं था. एक छक्का पहली गेंद पर, फिर एक
डॉट डिलीवरी और एक चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये एक बहुत ही सोची समझी एक बेहतरीन पारी की शुरुआत यहां पर करते हुए 46 रन बन चुके हैं। ये चौथी ओवर शुरू है यहां पर, और अगर हम ओवर प्रति ओवर इन दोनों टीम के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो चौथी ओवर में जहां पर थोड़ी सी संभर कर खेल रहे थे मैसूरू वॉरियर्स, चौथी ओवर की समाप्ति पर उनका स्कोर था 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और वहां पर 46 रन है और 47 अब बन चुके हैं। एक रन की बदौलत यहां पर एक सिंगल ले लिया है चौथी गेंद पर। 3.4 ओवर में 47, तो मतलब काफी आगे हैं, 20 रनों से आगे हैं, और 2 गेंदे और या स्क्वायर हो चुके थे, पूरी तरह बीट हो चुके थे इस गेंद पर। और अगर ये बैट नहीं लगता तो प्लम एलबीडब्ल्यू हो जाते, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई थी, मिडिल के तरफ जा रही थी और बिल्कुल सामने पाए गए थे वो बल्लेबाज। ये आखिरी गेंद है चौथी ओवर की, एक आर्म डिलीवरी, थोड़ी सी फ्लाइट कम थी, क्विकर इन द एयर थी, और 2 डॉट डिलीवरीज के साथ खत्म करते हैं ओवर। 4 ओवर के पश्चात 47 बिना किसी नुकसान के हैं गुलबर्गा मिस्टिक्स। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering. And it is the start of the 5th over, and it started off quite so well. A brilliant delivery, inside edge of the batter, and the keeper dived and tried his level's best to carry that, but that was a valiant effort, I would say, a very good effort by the keeper. Nevertheless, it is the flow and the start of the Mystics that is called upon, and it has been such a great start for them. Both the openers doing a brilliant job. Adarsh Prajwal 16 of 11 and LR Chetan 25 of 15. So both the batters in a very great form. We are in the 5th over right now, and 48 are the runs on the board, and the run rate is currently at 10, and the required is 9. So run rate with them, and this is the issue which the Mysore Warriors would be needing to work upon, as the bowlers haven't worked for them. Batting is great. They are putting up good big totals, and while I was saying that, I think I just jinxed or unjinxed the spell, as a very brilliant catch toward the mid wicket region has been taken, and it was Samarth who takes that brilliant catch, and it is Samarth who batted, who started off quite so well. 48 runs he scored, and he is been the one who takes the catch, and it is Adarsh goes back to the pavilion. Adarsh Prajwal 16 of 13. He wouldn't be happy with that. He wanted to give a jump start for the team. He gave 8, but he wanted to stay on the field for at least quite some time. But a brilliant bowling effort there by Karthik to take the wicket. Karthik bowling quite so well this over. Just 1 run and a wicket. 48 for 1 are the Mystics at this point. So just 2 balls remaining here. Karthik picks up, draws the first blood in his second over. And this is the second highest opening partnership for Mystics in this season. The first one was 63 runs by the opening pair, and the second one was 20. And this is an ideal start for Gulbarga Mystics in this chase of 199 runs. I mean, you always need to get off to a good start, a decent start whenever you are chasing high-scoring targets, and certainly Gulbarga Mystics have been able to do that.
just a single wicket they have lost here, and now Anish KV is the new player at the crease now. Karthik with a full delivery on off. Anish is lucky to find an inside edge off his pads and is able to get across the mark with a single, and he opens the count as well. For 49 on the board with a loss of 1 wicket. One last delivery left. Karthik needs to certainly be consistent with his lines and lengths. He has been able to break the deadlock which they were looking for, and now hopefully he will be hoping to end it on a positive note here. Can he strike once again and get the better of LR Chetan? No, he can't, as LR Chetan defends this good length ball into covers for a single. 50 runs on the board at the end of 5 overs. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Oh no! A chance goes a-begging. What a delivery. It could have been curtains for Chetan, but Shrisha has ended up hurting himself. It is a full-end delivery on-off. Chetan drills it back to the bowler in the air. Shrisha gets 2 hands on it, but is unable to get a hold of it. A brilliant start to the over by Shrisha. 2 balls, both dots. Anish under pressure now as he almost gave away his wicket. 50 runs on the board for the loss of 1 wicket. We are now in the final over of the power play, and they certainly need boundaries. And Chetan hands a beautiful maximum over the long off fielder. Shrisha is taken aback by this. It is full and delivery on off, a bit flighted as well. Chetan is down on one knee and he muscles it way over the long off fence for a biggie. Yes, it was a great shot by Chetan. 32 of 19. He's batting with such great form here. He lost his partner in the wicket, but he's continuing with that strive. And now Shrisha, after getting hit for that 6, he just says he just showcases to LR Chetan that I am also a great bowler. This time ball spun quite so well, and it was really close to the bat to edge, but nevertheless straight to the keeper. And now the ball has been pushed towards the mid-wicket region for just a single here. A single taken, and it is 57 for 1. The power play
has been with the Gulbarga Mystics, and they would be quite so happy if they don't lose any wicket at the last ball. But nevertheless, 142 runs required, and 142 runs, if they continue with what they are doing right now, wouldn't be a hard task. And the bowlers of the Mysore team would be needing to take some wickets, and I think I mean I am deja vuing a lot nowadays. As I was saying, if a wicket would fall in the last ball, it would be Mysore who would be happier, and it is the wicket of Anish, who was trying to hit the ball towards the mid wicket, and the cow corners region went down on one leg, but didn't time it well, got an edge of himself. The ball went towards the covers region, and the fielder, doing no wrong, caught the catch, got the wicket, and that is the end of the second man for the Gulbarga team, and it is the captain in Nair who gives out his wicket, and it is Anish Kevi who comes and goes back to the pavilion. It is 57 for 2 after the 6th over. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active. Smaran R now comes at the crease and joins LR Chetan, who is looking to be in formidable form here. He has scored 33 runs so far in this innings and has certainly done most of the damage here with the bat for Gulbarga Mystics. Jagdish has Suchit now into his third over. This is a short ball outside of Chetan, taps it into point and gets across in no time. This has been a brilliant start for Gulbarga Mystics with the bat, but they have lost 2 wickets in quick succession, and this could certainly take the momentum away from them. Karan Raya now setting up his field for the spinner and for the new batter as well. Will he be aggressive with the field? Will he keep a slip in place? No, he does not. He thinks that the power play has been done, and he will place most of the players outside the circle here, trying to limit the scoring places for the batters. I mean, making it difficult for them to find the gap. It is Fuller now outside of Smaran. Gets the on drive out now and pushes it towards long on for a single. He is off the mark. LR Chetan back on strike. He is looking good. 34 of 23 balls so far. He has hit 3 boundaries and 2 sixes so far, and certainly he has been a very lethal asset for Gulbarga Mystics in this match. Another single now, as this short one is cut towards the sweeper cover region, only for 1. 60 runs on the board now. The required run rate is slightly over 10 runs, while the current run rate is exactly at 9. This was the other way around before the 2 wickets were fallen, but now Mysore Warriors are trying to get back in this game. One last delivery now for Suchit. He has only given away 3 runs in this over so far. Just brilliant spin bowling from him. And Karan Nair certainly trusts his spin and trusts him to get them back in the game. A single to end the over as this is played towards long on. At the end of 7 overs, Mystics 61 for 2.
Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. पटकी हुई गेंद लेफ्ट आर्मर है शशि, पहली ओवर करने आए हैं 8वीं ओवर इस पारी की शशि कुमार, और पहली गेंद पटकी हुई उन्होंने डाली, ऑफ ब्रेक करते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है कि इन्होंने अब थोड़ी सी विकेट लेने की प्रयास और उसके उपाय योजना करने की जरूरत है, क्योंकि चेतन अब 35 रन पर खेल रहे हैं, 24 गेंदों का सामना वहां कर चुके हैं, और स्मरण जो है वो 3 रनों पर खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप रनों की गति देखिए, 10 रन के आसपास चल रही है, 8.5 9 के आसपास चल रही है। अगर हम देखें तो यहां से 11 रन भी अगर जरूरत है हर एक ओवर में तो वो बन सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में 8 विकेट हैं। और अगर आप 15वीं ओवर में पदार्पण करते हैं और अगर आपके मानिए 3 विकेट ही गए हैं, तो वहां से आपको लगभग एक बहुत ही अच्छा मौका है उस रनों को प्राप्त करने का। यहाँ पर इनसाइड आउट खेल दिया है कवच के ऊपर से, और वहां पे बहुत ही अच्छा फील्डिंग, ये चेक किया जाएगा अंपायर द्वारा कि पिछला पैर बाउंड्री को छुआ था या नहीं, लेकिन उस एफर्ट के मैं पूरे 100 मार्क्स दूंगा। एक अच्छा यहाँ पर शॉट खेला गया था। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बोल रहा था ये कार्तिक है जो फील्डर जिन्होंने ये स्लाइडिंग डाइव मारी है रोप्स के बाजू में, और ये बेहतरीन सेव फॉर द बाउंड्री। आई मीन जस्ट ब्रिलियंट, इवन द थर्ड अंपायर डज नॉट हैव टू। बिल्कुल, और एक कार्तिक है जिन्होंने फील्डिंग की है, और एक कार्तिक है जो छुट्टी बना रहे हैं आज, हमारे बीच कॉम बॉक्स में नहीं है। तो बहरहाल किसी की छुट्टी होती है, कोई काम पे आता है। यहाँ पर 2 बल्लेबाज हैं, वहां पर ये प्रगति पर है, ये बोर्ड लगाकर छक्के चौकों के साथ खेल तो रहे हैं, दिक्कत हो रही है उनको रन बनाने में, लेकिन ये छक्का काफी हद तक उनका ये जो प्रेशर है ये हटा देगा और उनको एक अच्छी मानसिक स्थिति में ला देगा, क्योंकि अब तक 71 रन जो हुए हैं उसमें 5 चौके और 3 छक्के लग चुके हैं। और ये एक फर्क है, क्योंकि पहली पारी में हम देख रहे थे कि तकरीबन 34 रनों में 25 रन आए थे, 24 रन आए थे चौकों की मदद से, और बाद में वही एक कारवा बनता गया और 198 रन बन गए। यहाँ पर 71 पर 2 है, 7.4 गेंदों में, और चेतन और स्मरण दोनों भी अच्छा एक प्रदर्शन कर रहे हैं। कट कर दिया है, वहां पर फील्डर बिल्कुल है, स्वीपर कवर से वो दौड़ कर गए और बैकवर्ड पॉइंट पे उन्होंने डीप पॉइंट में वहां पे फील्ड कर दिया। 1 रन का इजाफा। आखिरी गेंद यहां पर 8वें ओवर की अब डाली जाएगी, और शशि उन्होंने उनकी पहली 5 गेंदों में 11 रन खर्च कर दिए हैं। ये 8वीं ओवर चल रही है, 9 के आसपास का ये स्कोरिंग रेट है। अगर आप विकेट नहीं खोते हैं, अगर आप संयम से 15वीं ओवर तक यही विकेट पर अगर आपने समझो 130-140 रन अगर बना दिए यहां से, तो आपको वो आखिरी की 50 रन बनाने के लिए 5 ओवर मिल जाएंगे। 8 ओवर की समाप्ति 73 पर 2 है गुलबर्गा मिस्टिक्स, उनको चाहिए 126 72 गेंदों में। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every delivery. And it is Monish Reddy who has arrived to bowl. A right arm medium fast bowler for the Mysore team. First ball of him just gave in a single, and it is Simran and Chetan who are Smaran and Chetan, I'm sorry. Reminded me of DDLs out there. But nevertheless, Smaran and Chetan batting quite so well. Smaran 12 of 7. He started his first 3 to 4 balls with some defensive shots, but then once he opened his bat, he is just wants to go for all the balls towards the boundaries, and Chetan is just looking in an astute form. 38 of 27, 3 fours and 2 sixes. The strike rate which he has currently is of 140, and he's batting in quite nicely. He has been continuing the form. He has seen 2 of his partners go back to the pavilion, but he is still thriving and striving on the crease currently, and he wants to chase this total, but a really close call, a bouncer down the leg, and it was Chetan tried to pull the ball, but it did miss his bat. It was a really close call. A keeper just putting everything which he has to dive towards his left, and he tried his level's best to get that. It will be given as a wide, but I think he saved those 4 odd runs, and that's a brilliant job of a keeper out there. And Monish giving a wide, and again a short delivery, and it was just placed or just stomped by Chetan. 38 of 28 now, 76 for 2 is the score on the Mystics board. So they have now settled down, and they are waiting for the right balls to be struck, but they will have to keep the run rate flowing, as the current run rate is at 8, which is still fine, 8.9. So yes, it is at nearly at 9, but they will be wanting to get that odd boundary out there. I mean, just focusing on the dive of the keeper earlier, I mean, the dive of that keeper certainly could get him some auditions for a goalkeeping role in any football side. I mean, that was just brilliant, saving a boundary for his side and not allowing extras or any freebies for the Gulbarga Mystics to get near the victory line here or anywhere near the target. I mean, Monish now has bowled 4 balls in his first over and has looked very decent. He has conceded only 4 runs, 1 extra. A slower delivery this time on a length, angling across the left-hand batter. Smaran tries to hit it through the line, but gets beaten on the outside edge. And once again, the keeper is sharp to not allow the ball to go through him and down to the third man fence. Just brilliant from the keeper. This was very slow. He got confused as well, but a quick recovery from him does not allow the batters to take a single. Monish now onto his final delivery. He has conceded only 4 runs. Just brilliant from the bowler. Another swing and a miss. Another once again beating the outside edge. Gulbarga Mystics now 77 for 2 at the end of 9 overs. Don't be a mere spectator. Become. And now, time for the strategic timeout. 2 minutes and 30 seconds on the clock.
Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an 77 पर 2 है 9 ओवर के पश्चात यहाँ पर 199 का लक्ष्य है और 11 ओवर का खेल बचा है। 122 रनों की जरूरत है। यहाँ पर थोड़े बहुत ज्यादा रनों की जरूरत है। चेतन खेल रहे हैं 40 रन बनाकर, स्मरण खेल रहे हैं 13 रनों पर, वेंकटेश एम अपनी दूसरी ओवर फेंकने आए हैं। पहली ओवर में 18 रन खर्च किए थे, उन्होंने 7 वाइड डाले थे, मतलब 5 वाइड तो एक ही गेंद में डाले थे और उनके एक अच्छे वापसी की यहाँ पर अपेक्षा की है करुण नायर ने और इसलिए उनको एक गेंद थमाई है। 10वें ओवर के लिए 85 रन थे 10 ओवर के पश्चात जब खेल रहे थे वॉरियर्स और अच्छी खासी एक साझेदारी वहां से बढ़ती गई। एक बहुत ही अहम चीज थी पहले पारी की जब वहां पर मैसूरू वॉरियर्स खेल रहे थे कि उन्होंने रनों के गति को कभी भी गिरने नहीं दिया और कैच ड्रॉप यहां पर
कैच ड्रॉप यहां पर सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर, यह कैच हो सकता था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है। चेतन को आपने नहीं, स्मरण को शायद आपने ड्रॉप कर दिया है। यहां पर एक रन उन्होंने ले लिया और गलत जवाब, यहां पर गलत जवाब फील्डर के द्वारा। वेंकटेश जो महंगे साबित हुए थे, उनको आप क्या दे सकते थे एक फील्डर होने के नाते? एक अच्छा कैच, एक ब्रेक थ्रू, हौसला अफजाई होती है जब एक गेंदबाज को विकेट मिलती है अपने ओवर में। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है फील्डिंग टीम की ओर से, क्योंकि तीसरा विकेट जा सकता था यहां पर और काफी मुश्किलात हो सकती थी। यहां पर दर्शक बहुत ही खुश अपना एक चेहरा देखते हुए बड़ी स्क्रीन पर। और ये एम चिन्नस्वामी, माफ कीजिए, एम चिदम्बरम तो हमारे अर्थ मंत्री थे। चिदम्बरम साहब, आई एम सो सॉरी कि आपकी याद आ गई, सॉरी नहीं, लेकिन ठीक है। एम चिन्नस्वामी स्टेडियम पर मैच चल रहा है, तो ये एक काफी जाना माना स्टेडियम है। वहां पर लोकल्स आते हैं, क्रिकेट प्रेमी आते हैं, काफी युवा जो खिलाड़ी हैं वो अपने मोहल्ले में रहने वाले इन डोमेस्टिक प्लेयर्स को देखने आते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। अब हमेशा वो अक्सर होता है ना कि आप भी कभी एक खिलाड़ी के रूप में जब उतरते हो तो आप भी अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको फोन करते हैं कि हमारी मैच है, तो आप जरूर आइए उसका लुत्फ उठाने के लिए। और काफी ज्यादा टिकट का दर नहीं होता इन मैचेस का। यहां पर खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में और ये चौका, इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा आगाज यहां पर चेस का। 83 रन बन चुके हैं 9.5 गेंदों में, और आखिरी गेंद ही है 10 ओवर की। अगर कुछ संयम से यहां पर खेला जाए तो शायद 199 का स्कोर पार कर सकते हैं। यही मैं कब से कह रहा हूं, शौर्य को सुन ही नहीं रहे हैं। यह भी कह चुका कि संयम, इस चीज में संयम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर संयम होगा तो फल प्राप्ति हो सकती है। 199 का स्कोर है, 83 बन चुका है 9.5 गेंदों में। और ये पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश थी लेकिन संपर्क नहीं हुआ बल्ले के साथ। 10 ओवर की समाप्ति, 83 पर 2 है मिस्टिक्स। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify. Monish starts his second over with a short ball. Second ball, also a short ball, but this time a slight nick and the keeper pouches it safely. A much needed wicket for the Mysore Warriors. Karun Nair, a happy skipper right now. Monish with the breakthrough. And once again, Smaran, who got off to a decent start, has to walk off here back to the shed. 10.1 overs, 84 for 3 are the Mystic Warriors. Monish picks up a wicket in his second over. It could be a no ball. I think the umpire has asked the batter to wait, and it is clearly a no ball. I think the replays are certainly proving that he did not have any part of his leg behind the line. And yes, it is a no ball. The wicket has been chalked off. So the current score is 85 for 2, and now a free hit will be coming up. I mean, what a start to this 11th over. Monish thought he had his wicket, but he did not. Karun Nair trying to calm down the bowler here, Monish Reddy, trying to tell him that focus on the deliveries that you're going to bowl from here on, rather than
being disappointed with yourself as he overstepped on his very first delivery and also a wicket taking delivery. 85 for 2 are Gulbarga Mystics. Free hit now. Free hit for Smaran, who thought who thought he was going back in the hut, but certainly finds himself back at the crease again. A short one outside off. He goes for the pull shot. He takes a wild edge, and the catch is taken at short fine. But as it is a free hit, it is not a wicket-taking delivery, and they cross for a single now. Chetan is back on strike. He's on 44, one hit away from his half century. Will he be able to reach to that landmark in this over? He still has 5 balls in his hand to reach to that landmark, and if he does that, then he would certainly hope to be more explosive and expansive with his bat once he crosses the 50-run mark. He has found the fence 6 times in this match so far, 4 boundaries and 2 maximums. Just brilliant batting from Chetan. Similarly, in the earlier innings, it was Samarth who took care of at one end for Mysuru Warriors. But now Chetan holds out in the deep. He tries to go for a biggie. He tries to get to the landmark in a fine manner. But Monish now gets his first wicket of the night. It could have been a second, but he served in no ball earlier. But this time, I think it is a legal delivery. Chetan is walking slowly towards the dugout, waiting for the umpire's signal, because he thinks that this could again be a no ball. But this time, the replays confirm that Monish has some part of his leg behind the popping crease, and this time it is a legal delivery, I feel. So still, the umpires are waiting for the confirmation, and the finger has been raised. LR Chetan goes for 44 runs. Gulbarga Mystics are 86 for 3 at 10.2 overs. Yes, and that no ball might be a blessing in disguise, but nevertheless, it is the Chetan, the main man who is batting quite so well. LR Chetan, who goes back, and Monish is the bowler who gets his last laugh as he started the over with a wide, then a wicket which was converted to a no ball, a single then taken by Smaran, I am sorry again, and then it was the wicket of LR Chetan. McNeil, the new batter coming in, and the situation for Mystics from being great towards the 10th over has just shifted quite so well to be a bit bad, I would say. They are in a pit, and a good partnership is needed from here to get them out of that. And McNeil Norona has come on the crease, has his quite a great, I would say, nickname on his back with the number 69. It is Mackie, which I think his teammates call him, and he has a responsibility over his shoulders to get those big runs. 113 required of 58. It is not a simple task from here on for the Gulbarga team, and they would be needing to show some skills and some batting prowess, as Smaran and McNeil are currently batting. And Smaran, yes, he has played 13 deliveries, 15 runs he has scored, and he was just on, I wouldn't say flight mode, but he was giving the strike to the batter who was batting with him, LR Chetan, and LR Chetan was doing the rest of the job of going for the big runs, but now he has the responsibility to get those big odd runs, and this is a fix which they have to come out of, McNeil and Smaran, as Smaran will have to change his momentum, will have to change the style in which he is batting. He was mostly taking singles and giving LR the strike, but now he'll be needing to anchoring this partnership. He'll have to be the main man to I would say smolder or to sculpt innings from here if they want to get a W till the end of the game. 113 are required of 56, and it is Mystics now who have a bit of a pressure over their shoulders, and Mysore Warriors
are quite so happy. Last ball of this over. Now Monish from a terrible start, I would say, started off with a wide, then a no ball, then a single. But after that wicket of LR Chetan, the bowling of him has been perfect. 2 dots, then a single, and he would be wanting to end this over with that strive. He has bowled in 2 overs, 1 wicket for him, and just 8 runs given. This time outside the off, a bit fuller, and a dot will be there to end the over. It is 11 overs gone. It is 87 for 3 for the Gulbarga Mystics side. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the 12वीं ओवर की शुरुआत यहां पर 88 रन 3 विकेट के नुकसानों पर। अब देखिए ये जो औसतम स्कोर जो आपको हर ओवर में बनाना है वो तकरीबन 13 ओवर की कगार पर है, उस दर पर खड़ा है। 1 रन 2 रन से अब बात नहीं बनने वाली। आपको 1 ओवर में, मैं कह रहा था 1 ओवर में आपको जरूरत है 1 6 या 2 चौकों की, पर यहां पर चौथी विकेट का पतन। यहां पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मोनिश रेड्डी घुमा रहे हैं। 2 ओवर में 8 रन दिए थे पहले, सॉरी वेंकटेश, मैं माफी चाहूंगा सभी श्रोताओं की। 25 रन देकर उन्होंने पहला विकेट लिया है। थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन वहां पर खुद की ही काबिलियत पर विश्वास रखते हुए यहां पर ले लिया है पहला विकेट अपने लिए। 88 पर 4 हैं, 12वीं ओवर है, और अब कहीं पर ये जो आपका गिरफ्त है अब सक्षम होती हुई, और ज्यादा सक्षम होती हुई 12वीं गेंद पर 12वीं ओवर में आपको चौथा झटका लगता है। तब आप सोचते ना कि मैं कब से कह रहा था कि अगर आप 15वीं ओवर तक इसी हाल में खेलें और 2 ही विकेट या 3 विकेट पर मान लो आपने 130-140 तक का अगर सफर कर लिया तो उसके बाद थोड़ी सी आसानी हो सकती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुश्किल वो सफर अब लगता हुआ, क्योंकि 111 रन अभी भी चाहिए। नेल्सन अभी भी दरकार है 52 गेंदों में। हो सकता है यहां पर कुछ भी ना नहीं है, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी का क्रम देखें तो शायद ही अब एक बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज यहां पर बचे हुए हैं। अमित वर्मा आ गए हैं जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पहली इनिंग में, और यहां पर विकेट के पतन के बाद क्या होता है कि अक्सर वो एक छोटी सी मायूसी आपको एक शांत स्वरूप में लेके जाती है, और आप कभी कभी उसमें खो जाते हैं, और एक और विकेट भी यहां पर जा सकता है। तो इस माहौल से बाहर निकलने के लिए आपको रन बनाने हैं, उस रन बनाने के लिए आपको इस माहौल से बाहर निकलना है। तो एक दूसरे के साथ ही चलता है ये पहिया। और जब आप देखते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ 51 गेंदें बची हैं, 110 रन बनाने हैं, तो शायद आपको अब स्कोर बोर्ड की तरफ देखना बंद करना चाहिए और थोड़े से शॉट लगाने के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। इस ओवर में दूसरी विकेट हो सकती थी। बहुत ही अच्छी डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश वहां पर की थी, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ही अच्छा एफर्ट, उम्दा एफर्ट, तालियां हम यहां पर बजा रहे हैं। इसका आवाज आपको वहां तक आएगा बिल्कुल। मैं क्लैप्स प्ले करता, लेकिन वहां पे दिलो जान से हम चाहते थे कि वो कैच पकड़े, क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्राउंड कवर करके आए थे। डीप मिड विकेट से आए थे काउ कॉर्नर की तरफ, और ये पुल किया था। वहां पर लॉन्ग ऑन खड़ा था, लेकिन जो एफर्ट इस बंदे ने उसमें झोंक दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। और अब 107 रन चाहिए 50 बॉल में,
बट आपको पता ही है 50 नंबर किससे रिलेट करता हूँ मैं अभी 50 दिन बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 50 दिनों में, और ये महाराजा ट्रॉफी जो है ये कर्नाटका में खेली जा रही है। तो मुझे सिर्फ अपने कमेंटेटर्स जो पार्टनर्स मेरे साथ बैठा है शौर्य और स्वप्निल, उनसे जानना है कि क्या ये वर्ल्ड कप में इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि वो कप उठाए अगर एक इंडियन को पूछे, लेकिन मैं बहरहाल चाहता हूं कि हम सभी टीम्स के ऊपर ध्यान दें। जो हम कह रहे हैं कि 4-5 टीम जो है वो अच्छा खेल रही है, सबके जहन में एक भारतीय अगर आप हो उससे आप पूछें तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, लेकिन उनका जो वनडे का फॉर्म है वो भी अच्छा है, खासा है, और अच्छी टीम है उनके पास। मैं चाहता हूं कि मतलब मैं अगर एक आप पूछे कि मुझे अगर बताया गया तो फिर बहरहाल ये 12 ओवर के बाद 93 पर 4 हैं और 199 का टारगेट है। इस बात पर हम ब्रेक में नहीं जाएंगे। 4 टीमें जो मुझे लगती है आगे आ सकती हैं, एक क्योंकि एशियाई कंडीशन है तो श्रीलंका, इंडिया, और इस भाग में अच्छा प्रदर्शन करने वाली एक ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो क्रिकेट ही अच्छा खेलते, चाहे आप चांद पे खिलाओ या मंगल पे, वो अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलते हैं। तो एक अच्छा 3 ये हो गए, और चौथा मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड के साथ। इंग्लैंड भी है लेकिन इंग्लैंड मेरे लिए 5 पर है और 6 पे है पाकिस्तान। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि फाइनल अगर देखा जाए तो इंडिया न्यूजीलैंड थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड बहरहाल मैं दिल से कह रहा हूं, और अगर दिमाग से चाहूं तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका। पाकिस्तान क्योंकि हमारी थोड़ी सी ऐतिहासिक दोस्ती रही है हमेशा से भारतीय होने के, लेकिन हाँ वो मेरी 5वीं टीम रहेगी। हाँ न्यूजीलैंड मेरे दिल में एक बहुत ही अच्छी जगह है न्यूजीलैंड प्लेयर्स और टीम के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो भी आगे है, लेकिन सभी तो आगे नहीं आ सकते। ये एक नो बॉल यहाँ पर मोनीश द्वारा और फ्री हिट होगी, फिर एक बार 1 रन तो मिल गया है, और देखते हैं बल्लेबाज इसका कितना फायदा उठाते हैं। 13वीं ओवर शुरू है, 93 पर 4, उसके बाद देखते हैं क्या 95 पर 4 माफ कीजिएगा क्या होता है फ्री हिट का। जी हाँ, यहाँ पे फ्री हिट मिल गई है मकनील को एक शुरुआत की यहाँ पे रचना करनी चाहिए, और ये काफी बड़ा नो बॉल है। हम इस लेवल पे इतने बड़े और इतने रिकरिंग नो बॉल्स नहीं देखना चाहते। मोनीश एक अच्छे गेंदबाज है, लाइन और लेंथ समझते हैं, यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी डालना समझते हैं, पर यहाँ पे उन्हें वो जो रिकरिंग अपने नो बॉल्स है उन पे रोक लगाना चाहिए। और जैसा आपने पूछा मुझे हमें ओमकार कि अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूंगा यहाँ पे, तो जी हाँ, एक इंडियन होने के नाते मुझे भी चाहिए कि भारत ये ट्रॉफी उठाए और वापस इंडिया में हो रहा है। और मैं थोड़ा टॉपिक से बढ़कर गेम की तरफ बात करूं तो एक बढ़िया फ्री हिट डिलीवरी मैं बोलूंगा मोनिश से, परफेक्ट यॉर्कर डाली, एक टो क्रशर डाली, और बैट को एज लग के रिकोशे हुई पैड पे, और एक चीकी सिंगल ले लिया है। तो वापस मैं वर्ल्ड कप के बारे में बात करने आऊंगा तो जी हाँ, मुझे तो इंडिया एक फेवरेट्स में लगेगी, क्योंकि उनका फॉर्म भी वैसा कह रहा है, पर अभी देखना पड़ेगा कि क्या हम वो सेमीफाइनल कोर्स को जो कहते हैं उसे ब्रेक कर पाएंगे। कैपेबिलिटीज तो काफी है, और जैसा स्वप्निल ने कहा न्यूजीलैंड भी एक अच्छी टीम उभर कर आती है, पर क्योंकि मैं वापस ये टॉपिक पे रोकना चाहूँ, क्योंकि वापस यहाँ पे डाली है मोनिश ने एक नो बॉल, और इसे वापस करार दे दिया गया है फ्री हिट का। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने पैरों पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा यहाँ पे मोनिश को, क्योंकि बार 3 बार वो एक बार तो अपना विकेट चूके थे, विकेट अपना खो बैठे नो बॉल की वजह से। उसके बाद यहाँ पे इस ओवर में 2 वापस नो बॉल्स आ चुकी है, फ्री हिट उनके तरफ जा रही है, पर इन एक्स्ट्रास की का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी बॉलिंग को एक्स्ट्रास की तरफ नहीं देना चाहिए, और वापस वो एक परफेक्ट यॉर्कर डाल के एक फ्री हिट को ज्यादा उन्होंने एक्सपेंसिव नहीं बनाया। और ये उम्मीद मैं नहीं करूंगा उनसे कि आप इतने एक्स्ट्रास नहीं दीजिए, आप एक अच्छी लहम है, आप अच्छी डिलीवरीज डाल रहे हैं, तो क्यों इन एक्स्ट्रास से आप अपना जो एक अच्छा स्पेल है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। और मोनिश को वो एक चीज काबू में रखनी पड़ेगी, इस लेवल पे नो बॉल्स की उम्मीद नहीं करता है आपका कैप्टन और आपकी टीम, क्योंकि नो बॉल्स भारी काफी पड़ते हैं। जैसे हमने देखा
वो विकेट शायद इतनी ना भारी पड़े क्योंकि बाद में वो बल्लेबाज वापस आउट हो गए, पर एक समय के बाद ये काफी भारी पड़ सकता है टीम पर। और इस बार फ्री हिट पे नहीं मारा बड़ा शॉट मकनील ने, पर उसके अगली डिलीवरी में भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, डीप मिड विकेट की तरफ मारा। और दर्शक काफी खुश होते हुए वहां पे बॉल को देखना चाहते हैं और बॉल की तरफ एक घेरा बनाते हुए थोड़ा समय लगा रहे हैं वो बॉल वापस ग्राउंड में भेजने के लिए। पर खैर, उनके लिए एक डिलाइटफुल मूवमेंट था ये, और एक डिलाइटफुल छक्का जरूर था ये मकनील का, और वो काफी खुश हो गए। वो कोशिश कर रहे थे इन छक्कों को आने की। 104 पर पहुंच गया है यहाँ पे टोटल, और 100 रन आ चुके हैं यहाँ पे गुलबर्गा की टीम के ऊपर। और अभी मोनिश डालेंगे अपनी आखिरी की 2 गेंदें इस ओवर में। और जी हाँ, वर्ल्ड कप पे वापस आते हुए तो मेरी तो यही अपेक्षा है। और जैसे स्वप्निल ने कहा कि श्रीलंका एक अच्छी टीम उभर कर आ रही है, तो मैं उनसे भी थोड़ी उम्मीदें रखता हूँ। Also, talking about the World Cup, I think we have been desperately waiting for Jasprit Bumrah to get back in the action. And as India are preparing for their series against Ireland, Jasprit Bumrah will be leading the side, and it will be very crucial to know if he will be back at his best during the World Cup time. And certainly, मेरे हिसाब से पेस बॉलिंग और डेथ बॉलिंग इसमें ही हम लैक कर रहे हैं रिसेंट इयर्स में, एंड आई थिंक जसप्रीत बुमराह कमिंग बैक इनटू द साइड विल ओनली हेल्प इंडिया ग्रो एंड demolish their oppositions if they are able to find the rhythm. At the end of 13 overs, Gulbarga Mystics are 105 for 4. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with cricket. Nicely poised would have been words to say if the score would have been 130, 135 in the 14th over, 106 for 4. The score does not just allow me to speak, but 93 in 41, quite possible if they go berserk from here on. A short delivery being slashed hard towards the long on region, and would have been a great catch, but just dropped in front of the fielder who was running towards the delivery. Bowled at decent pace, but the shot was never on. He wanted to pull it towards the square of the wicket, towards the leg side, and he wasn't able to connect that ball pretty well. In the 14th over, if you're talking about a score of 199 to be scored towards the end of 20th over, and you are scoring 107 for 4 for the time being, you are expecting way too much from the batters of the lower order. Now, it was a shorter delivery once again played by the right-hander towards the long off region for only a single. So good shots are not giving them those big runs. May it be a single or a double, it's not going to hurt the intentions of the Mysuru Warriors, because they are defending 119 and a score of 190 plus for the second time that they have achieved, and just falling short by the 200 run mark by a couple of runs. But here today they have bowled exceptionally well. They have not got more than 4 wickets, but the bowling has been so good that they have not allowed them, Gulbarga Mystics, to get away with the scoring. Flourishing has not been there. Always important to put yourself in a situation where you start thinking, not the second time, but I will allow a score of 190 to be chased against the bowling attack that we have. You can have the odd overs being taken for runs more than 10, 12, say 15.
but you have to believe in yourself. And we are talking about the score now, 90 required in 38. It's pretty much your match if you are, Bengaluru, if you're a Mysuru Warriors fan. But in that course, the fifth ball of the 14th over has been flicked towards the backward square leg region for a boundary. And Vandage is now gone for 8 runs in the first 5 balls that he's bowled in his first over. And wherever you think the ball can travel towards the boundary, it is just a fielder which is there prominently placed. But now in this case, it was a good shot that won the race against the fielder who was chasing. And the last ball of the 14th over coming up, 113 for 4. Bandage in the first over has conceded 8 runs. What will it be? It is a straight shot again towards the long off region for a single to end the 14th over. 114 for 4 are the Mystics. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating... And it is Suchit who comes in, and it is a wicket for his start. It was the bat of McNeil Norona who was batting, and he wanted to cut the ball
didn't use his feet whatsoever, and it is Jagdisha Suchit who strikes in quite so well. McNeil going on of 20 of 14, and the keeper doing no mistake after that cut was converted to an edge, and a brilliant catch there by the keeper, and it is the wicket of McNeil, and it is the fifth wicket for the Gulbarga team. Gulbarga wouldn't be happy with the position in which they are right now. They need 85 more of these 35 deliveries, and the match is turning out to be really bad for them. Avinash D is come on strike. He's batting. 3 matches he has played, 6 runs he has scored, so not a lot of batting for him, but now he has the task with Amit Verma to get those 85 odd runs from here. And it has been some brilliant performance by the Mysuru bowlers last time in the game, in which they conceded 2 runs while they were defending. I think they have learnt from their mistakes, and good fielding towards the covers region to stop, I would say, 3 or 2 odd runs. It might be a boundary as well, but good fielding nevertheless by the captain. And now the Gulbarga team in a big fix, and it is really important for them to now just stay on the crease. To be honest, in this campaign so far, Gulbarga Mystics haven't been able to perform with the bat. I mean, in the past 2 matches, both the times they have only scored 138 runs. So keeping that in mind, chasing 199 was never going to be easy for them, and certainly that has been the case here. Mysuru Warriors are fighting back brilliantly with the ball, and suddenly the game is in their hand. They have picked up 5 wickets so far, but right now it is Avinash who is doing the talking with the bat. It is a full-length delivery in the slot. Avinash makes some room and tonks it over the bowler's head for a maximum. 1 last delivery left in this over. Mystics are 122 for 5 in 14.5 overs so far. Just the start Avinash was looking for with the bat. If he is able to continue with these big hits, then certainly he could get his side near the victory line. But first, they have a huge job at hand while chasing 70 runs of just 30 deliveries. It is a short delivery now coming inside from outside of Avinash. Goes back and cuts it to sweeper cover for 1. 123 for 5 are Mystics at the end of 15 overs. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let 123 ये स्कोर है, 124 अभी ये 16वीं ओवर की पहली गेंद. 29 गेंदों में 75 रनों की दरकार है. यहाँ पर काफी मुश्किल है, और ना कह रहे हैं मेरे दोस्त ओमकार यहाँ पर कि कहां से कहां लेकर आ गए हैं इस मैच को, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ हो सकती थी इस मैच में अगर वो विकेट नहीं गवाते. और यहाँ पर जैसे ही में विकेट नहीं गवाते, ये मेरा वाक्य पूर्ण भी नहीं होता, और वहां पर 6ठी विकेट का पतन. यहाँ पर 124 पर 6. 16वीं ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो चुके हैं अमित वर्मा, और ये बहुत ही बढ़िया विकेट भंडगे को. और मनोज भंडगे कहेंगे कि देखिए, मैं भले ही एक मीडियम पेसर हूं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी है. आप मुझे आंख बंद कर पुल नहीं कर सकते. अगर आपने मेरी लेंथ को नहीं पढ़ा तो शायद आपको लगेगा कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन वो बाउंस नहीं हुई.
वो एंटिसिपेट करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि आपके बैट पर आए और कंफर्टेबल आप लेंथ पर जाएं, फ्रंट फुट पर जाकर आप पुल करें, लेकिन वैसा नहीं हुआ और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक विकेट लेते हुए वो बल्लेबाज काफी नाराज होंगे। लेकिन क्या होता है कि आप 199 के बारे में सोच रहे हैं। हमेशा मैं पहले दिन से, जब से मैंने एक कमेंट्री का ये समझा है या फिर क्रिकेट को मैंने समझने की कोशिश की है, तो वहां पर आप 199 अगर चेस करें तो 199 के बारे में नहीं सोचना है, आपको वो 10-10 रनों के बारे में सोचना है जो आपको 20 बार बनाने हैं। और अगर आप 20 बार 10 रन कभी 8 गेंदों में, कभी 7 गेंदों में अगर बनाते हैं तो आप लगभग उस 120-115 रनों गेंदों में उस 200 रन को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्लेयर है सौरभ मुत्तुर, जो अब 8वें नंबर पर आए हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ना गेंदबाजी करी उन्होंने, और अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर करके इम्पैक्ट के लिए आए हैं तो अगर आप 8 नंबर पे आते हैं तो मतलब क्या अपेक्षा होगी आपसे? तो ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होंगी। जो भी रन आप यहाँ पर कमाए अपनी टीम के लिए वो नेट रन रेट के और ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निर्णय आ चुका है इस मैच का, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये बात तो तय है। लेकिन जो हम यहाँ पर वर्तमान में देख रहे हैं वस्तुस्थिति है, प्रैक्टिकलिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक पलड़ा भारी दिख रहा है मैसूरू वॉरियर्स का। ये है 16वीं ओवर, 3 गेंदें हो चुकी हैं, 125 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। भंडगे ने अपने 1.3 ओवर में 11 रन खर्च करके 1 विकेट ले लिया। ये हवा में मार दिया है कवर्स के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के। यहाँ पर ये इस ओवर की दूसरी सफलता, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद और अच्छी कैच। वहां पर कप्तान करुण नायर, ये सांकेतिक भाषा में मेरे दोस्त मुझे समझा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर लिया है करुण नायर ने, और 9 रन बना के डी अविनाश भी जा रहे हैं डगआउट की ओर। ये टाटा बाय बाय कर दिया है। बॉलर मनोज भंडगे सरप्राइज पैकेज बन के आए हैं, और अगर सरप्राइज पैकेज की बात करें तो सौरभ मुत्तुर में देखना चाहूंगा कि क्या किस हद तक अपने संघ के लिए ये मतलब मैं सोचता हूं ना कि जब से मैंने उस पारी को देखा है जहां पर मैं सोचा हूं अफरीदी ने 37 या 33 गेंदों में शतक बनाया था, बराबर, वहां से कुछ भी हो सकता है। और जब मैं वीरेंद्र सहवाग जी की बात सुनता हूं कि T20 में हर एक ओवर एक पावर प्ले ओवर होता है, तो खेलिए, आपको वहां पर जाके सिर्फ एक्सप्रेस होना है, आपको वहां पर जाके रन नहीं बनाने हैं, आपको एक्सप्रेस होना है। अगर आपका एक्सप्रेशन का लैंग्वेज 6 और 4 है तो जाइए, रोका किसने? 125 पर 7। ये वस्तुस्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई गुलबर्गा मिस्टिक्स की। बिल्कुल सही बात कही है स्वप्निल ने, बट मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, बट ये थोड़ा फनी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी गुलबर्गा मिस्टिक्स को 100 रन की जरूरत है ये विक्ट्री लाइन पार करने के लिए, क्योंकि 26 बॉलों में 74 रन की रिक्वायरमेंट है, जो काफी मुश्किल है। बट क्रिकेट इज अ फनी गेम एंड एनीथिंग कैन हैपन, एंड टू डू दैट वैशाख विजय कुमार इज द न्यू बैटर एट द क्रीज। 2 new batters, 1 bowler who is in brilliant form, picking up 2 wickets, but he is unable to get the better of Vaishak on the very first delivery. It is a short ball on the body. Vaishak tucks it towards square leg and crosses for a quick single. और मुझे बस एक कहना था, यहाँ पे एक्सप्रेस की बात हो रही है, पर अभी यहाँ पे तो एक स्लो मेल भी नहीं चल रही है गुलबर्गा मिस्टिक्स की, और हमारी ये डैड जोक्स का सिलसिला चलते ही रहेगा। पर आप हमारी मैच की अगर बात की जाए तो 73 रन रिक्वायर्ड है 25 बॉल्स में, और ये ले लो तीसरा विकेट भी आ गया है इस ओवर में। क्या बढ़िया कैच पॉइंट रीजन की तरफ, क्या बढ़िया कैच पकड़ी है यहाँ पे सौरभ का विकेट लेने के लिए तुषार सिंह। ये वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट में जरूर देखी जाएगी। अपने राइट की तरफ डाइव करते हुए काफी तेज तरार से मारा था ये कट शॉट, बॉल की गति का इस्तेमाल किया था, और तुषार बिल्कुल कोई भी गलती ना करते हुए एक ब्रिलियंस ऑफ कैच मैं कहूंगा यहाँ पे सौरभ मुत्तुर को आउट करते हुए। सौरभ मुत्तुर केवल 1 रन बना के वापस जा रहे हैं पवेलियन में, और भांडगे क्या खुश हो गए। 3 विकेट 1 ओवर में, यहाँ पे ओवर की उनकी एक बढ़िया ओवर की समाप्ति होते हुए केवल 3 रन आए इस ओवर में। 126 फॉर 8 पहुंच गया है गुलबर्गा मिस्टिक्स का स्कोर।
Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. जी हाँ, और यहाँ पे हम 17वीं ओवर की तरफ पहुंच गए हैं और 127 फॉर 8 पे चल रहे हैं मिस्टिक्स। अभी मैसूर की टीम की एक ही उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे 2 और विकेट कहाँ से चटकाए, कैसे चटकाए। इस बार डाउन द लेग बॉल डाली थी यहाँ पे गेंदबाज हार्दिक राज ने, और हार्दिक राज बल्लेबाज है सॉरी, और श्रीशा अचर जो गेंदबाज डाल रहे थे वो हार्दिक राज जैसी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने डाउन द लेग डाली और स्टंपिंग की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे विकेट कीपर। अंपायर की तरफ दिखाया अपील और अंपायर ने कहा जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बैटर का पैर ही नहीं हिला है। तो अभी पैर जरूर हिले बैटर के, एक सिंगल लिया है उनने भाग के, और श्रीशा अचर जो एक इम्पैक्ट खिलाड़ी अंदर आए हैं उनके साथ अभी देखना पड़ेगा कि विजय कुमार क्या करते हैं। यहाँ पे हार्दिक राज के साथ इस बार कवच की तरफ मार दी थी गेंद और एक सिंगल लेने की कोशिश पे 2 रन ले लिए, तो एक के साथ एक फ्री मिला है उन्हें 1 रन, क्योंकि ओवर थ्रो हुआ था, तो 2 रन आ गए हैं। अभी 68 रन की अपेक्षा है। बेहतरीन रनिंग यहाँ पे, काफी बढ़िया। लोग हमें लगा था कि वो लोग सिर्फ 1 ही रन रहेंगे, बट क्योंकि फील्डर लॉन्ग ऑन से इनर सर्कल की तरफ आ रहे थे, इसके लिए वो लोग दे वर एबल टू टेक 2 runs here. Srisha now on a sport delivery. Vaishak tries to be aggressive, but is safe now because it does not carry to the deep mid-wicket fielder. It meets him on a couple of bounces and they cross for another single. Vaishak moves to 5 runs of just 4 deliveries now. Srisha के 2 गेंदें बची हैं अब इस ओवर में। मिस्टिक्स 132 for 8 at this moment. Hardik Raj on strike and he will be facing his second delivery, slightly shorter on middle. Hardik drags his pull shot to deep square leg for another single now, but these singles are certainly not hurting Mysore Warriors here. Gulbarga Mystics need some inspiration with the bat from their lower order here, and only a special knock can get them over the line. But as far as the runs are concerned, they will be hoping to improve their run rate rather than taking a huge blow in the points table. A very good delivery to end the over. Mystics are 133 for 8 at the end of 17 overs. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering 18वीं ओवर शुरू हो गई है। यहाँ पर 134 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 65 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में। भंडगे अपनी 30वीं ओवर करने आए हैं। देखिए, पहली विकेट गिरी 48 पर, दूसरी 57 पर, तीसरी 86 पर, चौथी 88 पर, पांचवी 114 पर, छठी 124, सातवीं 125 और आठवीं 126 पर। तो मतलब 4 विकेट थी 188 पर, वहां से 8 विकेट 126 पर। मतलब आपने तकरीबन 38 रनों में हाँ बिल्कुल 38 रनों में आपने गंवाए हैं 4 विकेट।
और वो भी आपने ऐसे समय पर गवाए हैं जहां पर आपके सेट बल्लेबाज खेल रहे थे, आपको जरूरत थी रनों की, आपने अच्छे शॉट खेलने की कोशिश नहीं की थी, आपने वो बल्लेबाजी का जो रुतबा होता है वो खो दिया था। और यहां पर गेंदबाजों ने एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, जिसके वजह से ये स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 135 पर 8। अगर आपको याद होगा तो 17वें ओवर की आखिरी गेंद भी थोड़ी सी इनसाइड एज लग के स्टंप पर जाने की कगार पर थी, लेकिन नहीं पहुंची क्योंकि थोड़े से लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड थे बल्लेबाज भी। 63 रन चाहिए, 15 गेंद बची हैं। यहां पर पहले 3 गेंदों में 18वीं ओवर में 3 रन आए हैं। भंडगे क्या ओवर रही उनकी 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे। आखिरी में तो वो कैच भी बहुत ही बेहतरीन था उस फील्डर ने जिसने कैच किया। यहां पर खुल के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शायद 6 होगा। यहां बिल्कुल 6 होगा, काफी अंदर खड़े थे फील्डर, लेकिन वो बॉल इतनी ऊंची थी कि अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर भी खड़े होते तो भी 6 ही रन मिलते। वहां पर एक बहुत ही करारा प्रहार देते हुए वैशाख, बिल्कुल अच्छा प्रयास है लेकिन थोड़ा यहां पर नहीं, चौका है ये 4 रन है। अगर पीछे होते इस रिप्ले के बाद में मेरे सारे शब्द वापस लेता हूं, 4 रन वहां पर मिले हैं तो शायद अगर बाउंड्री रोप पे खड़े होते तो ये कैच होता और 9वां विकेट भी वहां पर गिर जाता। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आपने प्रयास किया है तो आपके प्रयास के आपको पूरे अंक मिले। यहां पर हवा में खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट पे शायद फील्डर होगा डीप में, हाँ बिल्कुल, और आउट हो गए। यहां पर दूसरी गेंद पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, चौथी विकेट ले ली है। मतलब देर आए दुरुस्त आए, किसे कहेंगे आप? मनोज भंडगे को, क्योंकि चौथी विकेट उन्होंने ली है अपने तीसरे ओवर में। तो अच्छी खासी फाइफर यहां पर ले सकते हैं। वो देर और दुरुस्त बैटिंग में भी आया था और उन्होंने काफी बढ़िया गेंद बल्लेबाजी भी की थी, जिसके वजह से मैसूर वॉरियर्स का स्कोर 190 के ऊपर गया था। और अभी ये लेट बॉलिंग करने आया है और इन्होंने बढ़िया 4 विकेट ले लिया है और एक सिंगल हैंडेडली अपने टीम को विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच के जरूर एक केपेबल का ये रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे और शायद वो उसकी तरफ रुख ले लेंगे। अभी देखना पड़ेगा, इसके बाद एक ओवर भी बाकी है उनकी, तो वो शायद उन्हें भी मिल जाए। और एक गेंद भी बाकी है, यहाँ पे 1 विकेट की जरूरत है यहाँ पे मैसूर की टीम को मैच अपने पास करने के लिए, मैच एक विक्ट्री की तरफ ले जाने के लिए। अभिलाष नए बल्लेबाज आते हुए हार्दिक राज के साथ, और हमें देखना पड़ेगा कि अभी कब ये मैच का समाप्ति होता है विद विक्ट्री, क्योंकि विक्ट्री तो अभी श्योर हो गई है। मतलब हाँ, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर ये जो मौका है या तो इसके चांसेस जो है वो लेस देन नथिंग लग रहे हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कब ये जो मैसूर की टीम है यहाँ पे सब कर्टन्स को डाउन करके ये मैच अपनी तरफ ले जाती है। आखिरी गेंद मार दिया था कवर्स की तरफ और फील्डर वहां पे कोई गलती नहीं करते हुए केवल एक 0 आएगा आखिरी गेंद के इस ओवर में। 18 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 140, 9 विकेट के नुकसान पर है गुलबर्गा मिस्टिक्स की। Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as This is going to be a dark past when they introspect the batting approach when it comes to the team meeting post this match. 19th over in progress and they are at 149 for 9 in 18.1,
And this is just a formality now to announce the winners, because 10 deliveries remain, 57 to get. Slashing hard towards the offside through the covers. Will it be fielded? Yes, it will be fielded. And a couple of runs added to the only single added to the total. Yes, and Shashi Kumar, he is a bowler who is just come in to bowl an over which will neither affect both the teams, since you have a wicket to achieve to win, or just complete the quota of 20 overs. He will be making sure that it does not concede more runs. And whilst I say that, it is a cover drive being fielded at the deep by Shrisha, who was one of the bowlers when in the previous overs. Yes, and why not try something different as a bowler? Try those odd deliveries. Try bowling some deliveries which you wish to bowl otherwise in a tough game. But here you can try those deliveries because you know that from here on you cannot lose. At least you cannot lose. And 143 for 9 is a score they would like to forget as soon as possible. A full toss, not been driven or not been pulled, not been shown the exact direction where it would have been a scoring opportunity. But nevertheless, you cannot expect much from the lower orders, as Abhilash Shetty is the new batter. I can't call him a batter because he's a prominent frontline bowler for the team of Gulbarga Mystics. But here he's asked to do. I read this statement the other day from Harsha Bhogle, the voice of cricket, as we call him, that it is only cricket where you're expected to do something on the field which you don't like doing. So if being a bowler, you're asked to bat to survive, and if it's a test match, you been sent as a night watchman, with the bowlers don't like to do generally. You ask them to bowl long spells, and at the end of this match, end of this innings, Mystics only could manage 144 while chasing 199. So a 54-run victory for the Mysuru Warriors, who made 198 for 5 in the first innings thanks to good half-century by Karun Nair. And then Gulbarga Mystics just did not have the groove or the grip on the match while chasing those 199 runs. 144 all out in 19 overs. 6 deliveries were remaining. So that means Mr. Manoj Bhandage does not get his fifer. And everyone in that bowling region gets a wicket. This is also the highest total for Gulbarga Mystics in this season. They have in the previous 2 matches they had only scored 138 runs, but this time they have scored 144 runs. They have managed to outclass themselves, but unable to outclass the total score that has been posted by Mysuru Warriors. Certainly, a knock that was missing from this chase was that except LR Chetan, no other batter could really turn up with the bat, because as we saw earlier in the innings, Mysuru Warriors, it was Ravi Kumar Samarth who set the tone for their innings, and it was Karun Nair who came into the attack, who came into bat and did the damage to the opposition with his wonderful half century, his second one of this campaign. Shaurya will take you through the batting stats of this match. Yes, and talking about the scoreboard, it is LR Chetan who started off well, 44 of 35, 4 fours and 2 sixes. Adarsh Prajwal, the keeper for the Gulbarga team, 16 runs off his 13 deliveries which he faced. KV Anish, 1 run for 2 deliveries. S. Smaran, 15 of 15. Makneel Norona, 20 of 14, Amit Verma 19 of 11, the Avinash 9 of 6, Saurabh Muttur 1 of 2, Vijay Kumar Vyashank 10 of 8, Hardik Raj 6 of 7, and Abhilash Shetty 2 of 4. Talking about the extras, 13 extras were given. And if we talk about the bowling, a brilliant performance by all the bowlers out there. M. Vyankatesh, 3 overs bowled, 30 runs given and a wicket. Jagdish Shuchit, 4 overs bowled, 31 runs given, 1 wicket. Ajit Karthik, 2 overs bowled and 14 runs given and a wicket. Shrisa Achar, the impact player, got in, 2 overs bowled, 14 runs and a wicket. Shashi Kumar, 2 overs bowled, 16 runs and a wicket. Monish Reddy, 3 overs bowled, 20 runs given and a wicket. And Manoj Bhandage,
3 overs, 19 runs, and a four-for. A brilliant four-for by him. Most probably would be getting the Man of the Match award, as he also scored 32 runs of 15 deliveries in his batting, also while being not out. So that was it for the match. And Mysuru Warriors, I think it is a redemption for them after the loss by not defending 201. They defended 198 here, so 199 here, and they would be really happy with the victory of 54 runs. That was it for today from the trio of Swapnil Yadav, Shaurya Londe, Omkar Iyer, and we will be back in the comm box for the Crick Kong Live podcast tomorrow. Till that time, I hope you had a great day, and I hope you have a great night ahead. Thank you so much. Goodbye. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.